Greetings, everyone. This is me, Zahra Bazar, again and again. This is my life, and I have to do this to save the Muslims, bring them out of this false religion, and so we can also gently save your souls. Gently, you can bring light and shine, the divine light inside of yourselves, and shine bright for yourselves and others. And I don't want to hurt anyone or not even myself. So, I mean, I would have been hurt if, what someone said here, I could have gotten a heart attack or ended up in the mental asylum for this also, a religious crisis, and finding out through Quran ayats that my religion is a false prophet, and not only Prophet Muhammad, but his whole progeny, and worse, Imam Hussein has lied to us. So I had to go watch Zafar Heretic, ex-Muslims videos on Khilafat, the kale, play of Khilafat, and against Imam Hussein. I heard Ghalib Kamal against Imam Hussein. I never said a thing, you see. So step by step, if you don't know this, to me also it's been revealed by some divine entity, um, step by step, so that I also would not be in that stage where get a heart attack or get some, a great shock. So thanks to that divine entity, that divinity who brought to me step by step so I could share with you step by step. So for example, right now I took you to Surah Hashar ayats and Surah Baqarah ayat later on. Who is this person? The description fits Prophet Muhammad, as I showed you in Surah Baqarah ayats 204 and 205. I made a mistake in uh, seeing interpreting that Surah Baqarah ayat 200, and I apologized and I corrected myself, and I explained this can happen, and it's not the end of the world, although I would wish it was the end of the world for me. So you see, step by step, I please forgive me if Shias are coming. Armin Navabi is also doing something. I'm not following him anymore because of a personal problem I had with him. He was saying that even Iran's Shias have been leaving. Iranis have been leaving uh, Islam, this religion. Now, this was perhaps some years back, right? So now I've come to this, which was quite difficult to explain in the beginning. So God revealed to me some true God, divinity, that, you know, this through an easy way, like showing the contradictions first, making mistakes, and getting startled again and again, and going to read the ayat again and again. So God revealed to me like this, and I'm sharing with you like this, slowly, slowly. So now I've forgotten the point. Just multitasking. Is there a? I'm using this other mic, although the sound is not great. You'll have to put it on full volume or something. I've tried to put a booster, volume booster application here. So let's see, is it better now? I mean, I have, but sometimes, I don't know how to fix the volume of that booster. Sometimes it's too loud, sometimes it doesn't work. Like it does work, but something to do with this. Mics are different. So having problems with that. Anyways,
I'm here, and you could get support also. Abdullah Samir mentioned support for the Muslims who want to leave Islam, and it hasn't been easy. So slowly, contradictions and all this. Even the divinity who revealed this slowly, right? It did not take me first to Surah Hasharites. I mean, I completely forgot what is mentioned, what is stated in Surah Hasharites. And then I went to Surah Baqarah 204 recently. I was stuck on, these contradictory ayats, Surah Tahrim, Surah Azab, the ones I was having problems, Surah Nur, ayat 33. I thought the Shias have won, and I couldn't even explain myself properly, but here it's not put properly, and then they'll say, no, look at the other ayats, chaste, keep chaste, keep chaste, and all this. What else is there I want to mention before I start showing you again? Please, I wish the best for you people, right? Please, please see this. You see now, as I was going through my, you see, I can't put my, like, I have eloquence problem, expressing myself, explaining myself problem. And the Quran, I felt, has this interpretation problem because we have Sunni and Shias, and we have many subsects in the Sunnis and or different yeah subsects that's all, and different subsects in the Shias also. And all of you, I believe that you love the Prophet and you are sincere, right? So I had to contemplate on the Sunnis. They love Prophet Muhammad like anything. Just because they don't love Imam Hussein like we did, doesn't mean they don't love the Holy Prophet. So I said, come to a, like, what I was appealing to the hearts of the Sunnis, that please come to a platform united under the umbrella of Prophet Muhammad. At least know, if you don't get angry at the Shias because they are some of the Sahabas they found hypocrites through your books and all. It's one God. Rasulullah is the main thing that you all love and honor with your lives, your property, and everything. So, this was my intention in the beginning, and now um, I'm out of my religion. I'm an ex Shia, ex Muslim. So, the import. Yeah, so I was reading Al Kafi and I couldn't explain myself that there's something wrong here. And I had the, like, I couldn't even want, like, I had this, I was, I can't explain myself actually. So I felt that imagination, mind, I couldn't put that until I met, sorry, until I read Jiddu Krishnamurti. Then I said, oh my goodness. See, no one has explained what. Okay, I got Imam Jafar Sadiq's on time. Time is a distance between two known events. But I feel Imam Jafar, why I'm avoiding this definition is because lately when I read Imam Jafar Sadiq's book online, I realized that they've copied it from the Greeks. They've stolen. So, and if I tell you this, like I have to keep certain things for not to say those good things. Like it says that no one has described a time like Imam Jafar Sadiq, but a certain paragraph I found there that says that kind of what do you call it, gave me the impression that Imam Jafar Sadiq even was like has copied it from the Greeks. Can't so, but to make it easy for myself, and I couldn't even explain this interpretations wrong and different. So I went very easy for myself to not to
get myself into these debates and but see the other side, the Shia side, the Sunni side, and all this, right? And so I had to make it easy for myself, and that's why I like this. Okay, do you see this Quran ayat now? Surah Nisa ayat 82 on your screen. Is it? Can you see it? Is it focusing? They do. Then do they not reflect? Sometimes this thing gets stuck, or uh, and trying everything like I don't want to waste money, and I want to save money. The more I want to save money, the more I get in a lost mics and all. It's not that loud, but it's okay. At least the voice is clear. You can put it on. You can even use your headphones or earphones if you like, earplugs. So here it says, and you know how the Shias even they wiggle their way out because the Imams. But remember, the Imams have said that if any of our hadiths are contradictory to the Quran ayats, reject them, right? The 12 Imams have said this. I've read it somewhere in Al Kafi or somewhere. So this is known. Or does Ijma come in? And please don't make it complicated for me, please. I know all the things, Ijma, but I just cannot express myself. So I made it in a very easy manner. And if people, Muslims, Shias, Sunnis, cannot understand this, like I was so shocked going to Christian Prince. Okay, he's what he is. And sometimes I could also start shouting and screaming. I cannot take it. So, but he takes it. He's got the stamina to stand there and take it. And then, of course, his way is harsh, but I had to take it. Uh, I've got to listen to his side, and the Muslims would just give him a hard time from one to another, to another, to another, to another, to another, and still come back and say, Christian Prince, you are lying, this, that. Okay, he may be some places like I make mistakes, I misinterpret the Quran ayats. We are not perfect human beings, not as yet. So those who have been perfect, I don't know, they don't even say they are perfect, the true ones. So this. Now there's see, please have a look at this. Because the imams, or if you use some other things like ijma, the consensus of the religious scholars, and so, okay, Prophet Muhammad did this, but then the imams had stopped doing this because Mukhtar was there. So I was like, for example, I was told by my father that, look, our imams did not fight, retaliate, or anything after Imam Hussain, Imam Sajjad, after being captive for 2 years, 1 year, 2 year in Yazid's court in Damascus, they were sent back to Medina, and he just lived a life peacefully and all this. But he did not object. I mean, Mukhtar stood up and took revenge like anything. You see how we wiggled our way out of this, that we are not the terrorists. And since God can make changes, so can Prophet Muhammad, and so can who? The Imams thereafter, according to the Shias. So, with due respect, I'm telling you that then this ayat, when you're blaming other people and you can change your religion, it has, like, you can bring changes in. You've blamed the Jews in Surah Jummah that you take yourselves as friends of Allah exclusively, you know, excluding the rest of the people.
But then in Surah Maida, ayat 55, is it? Take Allah, His Messenger, and the believer, the one who says Salat and bows in Ruku and gives Zakat, according to the Shia interpretation of that ayat, as all yours. Hmm? So I tried to make it simple so that I could make life easy for myself, accept the changes, accept the shock I see here, religious crisis, through Quran ayats. And also, slowly, slowly, you can accept it and not make life difficult for me. And please cooperate. Because this is what I want for you too. The best to cooperate. I would cooperate, I would give you my understanding heart if you are in distress. I'm not going to come here and make life difficult for you. I wouldn't come in your life to make life difficult. I would offer an understanding heart. I've seen many people cannot. My mother was like that. If, let's say, reincarnation is not in my, uh, not even hidden in the Quran, not in my religion, like I thought maybe it's hidden because someone had told me, a Muslim, Sufi. So uh, I go to my mother and I say, Amma, I'm reincarnated. She's not going to snub me and do this. So I learned from my mother how to pay attention to children, what they say, other people in distress, or what they are saying. Maybe they could be, there could be something, and we can explain it to them in the most gentlest, understanding hearts. You know what it is? Like I read Robert Shuller's book and found that when God asked Hazrat Suleiman or Dawood, I think it was Solomon. Solomon, what do you? I'll give you. What do you want? Uh, so Solomon said, "I want a discerning heart." But Robert Schuller spoke in his book. I think he put an understanding heart. Although in the Bible there are many, it's like a judgment, to a discerning mind to judge. But I chose the understanding heart. Robert Schuller's translation of that verse in the Bible. So I'm sorry, I don't understand the way of, and you may not understand. I also tell myself, calm down, be gentle, but I cannot. I apologize for that. Now you see this ayat. Do they not consider the Quran with care? Had it been from other than Allah, they would surely have found therein much discrepancy, contradiction, ikhtilaf. Okay? Now, ikhtilaf, we use it in Urdu also. Contradiction, much. But what if you find one or two contradictions? And recently, since in my last previous live stream, so perhaps I'll come to reason also, time, what is time, and all this. But recently I found this, again, I remembered that there's a verse in Surah Mujadila, and you can compare this verse to those verses in Surah Azab. This is a very obvious contradiction. So I've done this, but again, please make life very, very easy. You see, we have not been taught to make life easy. We have been taught to be martyrs, make life difficult, struggle in God's way, in God's religion, be martyrs. Like there was a time I wouldn't allow anyone to sympathize or pity me. I would eat myself up. Martyr, martyr, martyr. But I wouldn't tell myself I'm a martyr. No, no one can console me. No one. Nothing can make me happy.
Martyrs. We are from the martyrs. We are followers of the martyrs. Imam Hussain. Well, Hazrat Abbas went, couldn't find water further. Didn't come back with water. Allah, those children in Karbala. No, no, Hazrat Abbas failed. I will never pass, even if I put my best efforts. We are martyrs. Oh, the extremists are coming to kill us. They will get us. Remember Imam Hussein and Bibi Sakina. And if your brother goes, Imam Hussein and Bibi Zainab, and like that. If your father goes, remember in the like Imam Hussein and Bibi Sakina, right? Very easy. This verse I feel is so apparent, so manifestly clear about what it would be a lie. It is an objectionable statement. Again, look at the Arabic word. Okay, it may come close to the English word. Loosely put, khilaf, pronounce zahar, zahir, zahir. Their mothers are not their mothers, except those who give birth. And indeed, they surely say an evil word of the word and a lie. I don't know, but it's put lie here was the run. Please mind your ears. Mind your ears. Volume down. Can't you? وزورا. Why would it? Wazuran. Lie. Or a false statement, whatever you may put it, right? However you may put it. Look at the different translations also. If you don't agree to this, lie, it's put lie here. Okay? Now, just think of a little bit. Empty yourselves totally. Make life simple, simple, simple. Simplify. Simple is the best. I learned from Mr. God, This Is Finn by, oh, Mr. God, This Is Anna by Finn, the book. Simplify, simplify. I can give you the dot, which is Imam Ali. Anna has explained how the dot can come. And the dot does not change. The ba, that's why Imam Ali, don't let me give myself a heart attack here. I've done all that. Anna, like a scientist, great scientist. She was only for 3 years old, I don't know, 5 years old, 6 years old. She met Finn, and at the age of 8, I think she passed. She had an accident. She fell from the tree. It's in that story. It's a real story in London. It happened. Hammersmith, long, I think. Anyways, it happened, and the author was Finn. His pseudonym, his real name, I think, was Anthony. No, sorry. Okay, okay. Maybe there's an actor Anthony Hopkins. Maybe it's a real name. Okay, I'm not going to talk about this. I can't explain. Sorry. Now, look here. The mothers are none but those who gave birth to them. Is it haram to simplify? Let's say at least for the sake of, you know, understanding the Quran. I don't know how to say it. How could the Shias miss? How could the Muslim? Okay, I can understand. How can the Shias miss? I can't understand that. I better not complete my sentence. I can understand the other Muslim Quran only people and all this.
Even them I cannot understand. How could they miss? You just have to take Surah Mujadila, it's not An-Nisa. Surah, Surah Mujadila, Ayat 2, and compare it with Surah Ahzab, Ayat. So I've put this, I should have put it in notes, but sorry, I cannot right now. I'm quite tired. So Surah Ahzab. What is this? They tell a lie because they divorce their wives saying that you are our mothers, right? But God has said none is your mother, right? No one can be your mother, except for those who have given birth to you. Or their mothers are none, none. But those who gave birth to them, none. And indeed, they are saying an objectionable statement and a falsehood. Please, your mothers are none. And if their mothers are none, then your mothers are none. Everyone's mothers are none except those who gave birth to you. Right? Simple, clear. If their mothers are none, then your mothers are none, except for those who gave birth to you. Simple. Reason, logic. It would apply to all. Like here, serving Allah and too hard. Okay. So where's that thing? Sorry, that ayat in Quran.com. Where is it? I just opened it. Surah Azam. Oh, you have believed. Remember the favor of Allah upon. Oh, God. Mothers of believers, the wives of the Prophet. You know where I'm coming to, what I'm coming to, right? This is, yeah. Allah has not made for any man two hearts inside his body, neither has he made your wives, whom you declare to be like your mother's backs, your real mothers. Zihar is the saying of a husband to his wife. You are to me like the back of my mother, i.e., you are unlawful for me to approach. Now he's divorced. This is the way. This was their way. Nor has he made your adopted sons your real sons. That is but your saying with your mouths, but Allah says the truth. He guides to the right way. Fourth ayat I've just read out. Now coming to the fifth ayat, call them by the names of their fathers. It is more just in the sight of Allah. But if you do not know their fathers, then they are still your brothers in religion and those entrusted to you. There's no blame upon you for that in which you have erred, but only for what your hearts intended. Your hearts intended. And ever is alive, even forgiving and merciful. Now, where is it? Where is it? Zahra, where is it? Why aren't you coming to it directly? So I'm coming to it. Sixth ayat. Nangalal, Madam Namaste. Nangalal ji Namaste. Hands together. Now you here tell me, please. Not sorry, not you, Nangalal, but the Muslims.
See this, isn't there a contradiction? The Prophet is more worthy of the believers than themselves. Sixth ayat of Surah Ahzab. And his wives are in the position of their mothers. What is this? Position of the mothers. Wait a minute. The Prophet is closer to the believers than their own selves. Nafs, Fusayam, Anfusam. Their own selves, nafs. Closer than your nafs. And his wives, Azwajahu, are their mothers. And possessors of relationships, some of them are closer to another in the decree of Allah. Please. Here it says the wives, Prophet Muhammad's wives, Nabi, his wives are your mothers, the mothers of the believers, faithful believers. Let's put it, Mu'mineen, mothers of the faith. How have you used this reason? Have you forgotten Surah Mujadila ayat 2? I mean, sorry, I'm like, because you see, sorry, I also don't like taunting people and all this, but you know, stop myself. Okay, I did it. Uh, but how shall I say it now? I'm really, she, Muslims, you want to kill for this? This is other than Allah. नंगालाल मैडम जी, क्या आप जैनिज्म के बारे में जानती हैं? बस इतना जानती हूँ कि वो बहुत पीसफुल है और थोड़ा पढ़ा है विकिपीडिया पे, हाँ थोड़ा जानती हूँ मैं, लेकिन उसके बारे में, उनके बारे में, सॉरी, जैन और ना जैन के बारे में मैं बात कर सकती हूँ इधर अभी, नॉट नाउ। आपको क्या, अभी मैंने, अच्छा प्लीज, ये आप शायद इधर देखें, इधर देखें भाई साहब। ओके मैडम जी, ओके, आप इधर देखें, इधर इधर देखें, बिकॉज ये हमारा शिया यानी मुझे पागल कर देगा, आखिर आखिर बेच देगा मुझे, मेरा बैक हर्ट कर रहा है अभी। सो पता नहीं, वर्ड्स आई डोंट हैव। अब देखें, ये बहुत सिंपल चीज, सिंपल चीज, सिंपल सी चीज है, सिंपल चीज है, सिंपल। ये ऐसा है कि सूर्य यूनुस की आयत 100 है, and it is not for a soul to believe except by the permission of Allah, and He will place defilement upon those who will not use a reason, the reason जो अकल यूज नहीं करते। अब अकल के कितने दराजात हैं, स्टेटस हैं, ये वो मुझे नहीं पता। अब शियाओं को देखो कैसे बेवकूफ बनाया है। शिया समझते हैं पीक ऑफ एलोक्वेंस इज इमाम अली, माइंड ऑफ दिस इज इमाम अली, intellect, the heights of intellect रसूलुल्लाह से लिया है ना, रसूलुल्लाह का वसी, वसी ऑफ अल्लाह है, रसूलुल्लाह का रसूलुल्लाह से लिया है। इससे कि शिया चाहते हैं कि वो अपने आप पे जुल्म करें, करवाएं। अब तो मैं ये कहूंगी, नंगा लाल कह रहा है कि मैडम जी, शिया पे इतना जुल्म, जुल्म क्यों होता है? सॉरी, हाँ आपके तो उसमें, तो इसलिए होता है कि वो चाहते हैं कि जुल्म हो उन पे।
किसी और चीज को देखेंगे नहीं, भले हम पे जुल्म हो। हम लोग वो है ना, बिकॉज यू सी इनके इनके जो प्रॉफिट, होली प्रॉफिट हैं, उन्होंने कह दिया, क्या कहा है, तो उस पे लीड करता है इमाम हुसैन। उनको लीड करता है इमाम हुसैन मैडम जी, लेकिन ईरान भी शिया है ना। ईरान सब सब शिया हैं हम लोग। जो भी जुल्म अपने ऊपर बर्दाश्त और इनवाइट करता है, बिकॉज ये बेचारे पॉलिटियंस जो थे पानी दे रहे थे ना, तो उसको कहा डू यू फाइंड इन पॉलिटिक्स को, कहा है कि यानी यू हैव टू स्ट्राइव, जुल्म तो करना है अपने आप पे। इस्लाम ने कहा है जुल्म करो अपने आप पे, स्ट्राइव, जिहाद करो, अपने ईगो को लाइक बॉक्सिंग करो और मारो और अपने आप को पकड़ो और इज्जत यानी करो कि जुल्म करते रहो अपने ईगो पे, बॉक्सिंग करो, ऐसे करो, मारो 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 मारो। बाइपोलर मैनिया। ऐसा हो गया ये थैंक्स टू दिस रिलीजन। तो ये देखो, डू यू ये एक सडिस्टिक अल्लाह है ना, सडिस्टिक है, मैसोचिस्टिक है, पता नहीं क्या है, क्या बोलते हैं। साइकोलॉजिस्ट को पता होगा मैसोचिस्टिक और मैकोचिस्टिक एंड सडिस्टिक क्या होता है। डू यू कंसिडर, ये आप देखें, तो इनको कहा गया है कि आप जिहाद करें, जितना पे हम पे जुल्म और सुन्नी आए एक्सट्रीमिस्ट या कोई जैसे अपने आप को मुसलमान समझता है एक्सट्रीमिस्ट। मैं तो कहती हूँ कि शाह ने अपने आप पे, ये तो एक ट्रेजेडी है इस्लाम की, ये ट्रेजेडी है, जैसे ट्रेजेडी। Do you consider giving of water to pilgrims, giving of water huh, to pilgrims equal? प्लीज आप श्याम पे रहम नहीं करें, मैं इनको पिटी नहीं करें आप, राइट। लड़ाई नहीं करना चाहिए मैडम जी, काम रहें। हाँ आपको डर लगता है ना। कह रहे कि नंगा लाल कह रहा मैडम जी मुझे तो डर लगता है, क्या क्या हो गया है? कि मैं पागल हो जाऊंगी? पागल तो मैं हो गई हूँ। मैं तो इधर जिन आए सब आए, सब कुछ। क्या आप क्यों डर रहे हैं इतना? डरे नहीं, डरे नहीं, कुछ नहीं होगा मुझे, जो होना है वो तो सब हो गया। आपको क्यों डर लगता है नंगालाल जी, आपको क्यों डर लगता है? Why are you scared? ये क्या है? जिद्दोजहद करें। Surah Tawbah at 19. Do you consider providing water to the pilgrims and tending the sacred? बेचारे बैठे आराम से पानी दे रहे हैं pilgrims को, sacred mosque को maintain कर रहे हैं। तो कि अल्लाह इनका कह रहा है कि बड़ा sadistic है, I must say now, यानी sadistic, you know। छोरे आप डरे नहीं, डरे नहीं, जो कहते हैं जो डरा वो मरा, तो आप डरे नहीं। क्या है कि व्हाट इज सैडिस्टिक मीनिंग, इधर मैं अपने फास्ट टैब पे देख रही हूँ। डिराइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, सफरिंग और ह्यूमिलिएशन ऑन अदर्स, सैडिस्टिक गॉड। आप देख रहे हैं इनका खुदा ने कहा है कि ये बेचारे बैठे हुए हैं पिलग्रिम्स को पानी दे रहे हैं, अगर हम नाचेंगे भी प्रेज
हजरत दाऊद था, बाइबल में लिखा है कि सिंगिंग द प्रेजेस ऑफ गॉड, सिंग करता था, गाता था हजरत दाऊद इन द बाइबल, राइट? गा गा के अल्लाह को प्रेज करता था। तो अब ये बोलेंगे कि नहीं, गाओ भी नहीं, गाने खराब हैं, तालियां भी नहीं बजाओ, खुश भी नहीं रहो, बस ये करो कि बिलीव इन अल्लाह इन द लास्ट डे एंड स्ट्राइविंग इन द कॉज ऑफ अल्लाह, यानी अपने नफ्स पे जिहाद। जिहाद अकबर क्या है, राइट? मारो 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 मारो, ऐसा मारो कि beat them, beat your ego, beat the shit out of your ego, sorry, I have to put it this way, जैसे कहते हैं कचुम्बर बनाओ ईगो का, छोड़ना नहीं इस ईगो को। गाना हराम है। आप शिया है ना, तभी आपके लिए गाना हराम है। आपको किसी मुसलमान ने पकड़ के ऐसा आपका दिमाग उल्टा किया है, जो मैं इनका दिमाग सीधा करना चाहती हूँ, तो आप मुझ पे आते हैं कहते हैं हाँ, गाना हराम है। ट्रम्पेट ब्लो होगा वो हराम नहीं है, जो बस लास्ट डे का आखिर हम आह निकलेगी, हम लोग सब खत्म हो जाएंगे। ट्रम्पेट कहाँ से आला है? कौन बजा रहा है? कौन सा एंजल बजा रहा है खुदा का ट्रम्पेट? मैं कहाँ शिया, मैं तो ऐसा ही बोल रहा हूँ था मैडम जी। मुस्लिम लोग बोलते हैं हराम, नहीं नहीं नहीं, कुछ ऐसे स्कूल ऑफ थॉट है जो कहते हैं मकरू है। मुझे लगता है एक शाफी या हनफी या इनके शाफी मलकी कौन सा है जो कहता है कि हराम नहीं है। हराम नहीं, एक तबका नीचे चलो, मकरू है शायद। तो अरब्स क्यों म्यूजिक सुनते हैं अगर हराम होता? वो शियाओं के लिए तो बिल्कुल ही हराम है, और कुछ सुन्नी सबसेक्ट्स के लिए हराम है, स्कूल ऑफ थॉट्स के लिए। सब सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स के लिए हराम नहीं है। सूफीज क्यों कव्वालियां करते हैं कुछ? आपको पता नहीं, आपको कहाँ से देखें, ये छोड़ दें, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, और इनका अल्लाह आप रहम नहीं करें। शाम पे क्यों जुल्म हो रहा है? अब मुझे पता चला कि हमारी माँ गई, हमारा बाप गया, यू नो हम लोग अपने आप पे जुल्म कर रहे हैं। और एक तो शिया आ जाएगा, मुझे कहेगा कि तुम क्यों बीबी फातिमा ज़हरा के बारे में ऐसे बात कर रही हो, और मेरे इमामों को क्यों इंसल्ट कर रही हो। इधर समझेंगे कि मैं इमामों को इंसल्ट कर रही हूँ जब उनका सही चेहरा दिखा रही हूँ। बाबा छोड़ दें, मैंने तो समझा कि मैंने कहा मथाखोरी कौन करेगा जाके इनके साथ। अब उस कल मैंने समझा, अगर सलाहदीन या वो एक ईरानी था, ईरानी अरन रा के उधर आया था, राइट? मैं तो तौबा कर दी, अपने माँ बाप की तौबा कर दी कि ज़हरा तुम क्या कर रही हो, तौबा करो, हेड बैंगिंग है। यानी मैंने अरन रा के उधर कहा, वो सुन्नी भी नहीं था, पता नहीं कौन था, ईरान से। मैंने कहा कि मेरे आई कांट बिलीव व्हाट आई एम हियरिंग हियर फ्रॉम दैट इरानियन perfect dawa Muslim in brackets. I said तौबा तौबा, मेरे माँ बाप की तौबा है। मैडम जी बिजर्क तो इंग्लिश नाम, हाँ बिजर्क मैंने अपना इंग्लिश नाम ही रखा है। इंग्लिश में अगर मैं लेवल एडेड नहीं हूँ, बेचारे बेचारे ब्रिटिशर्स तो मुझे बिजर्क कहते हैं ना, बिकॉज मैं शिया बिजर्क, शिया से तो मैं बिजर्क हो गई, राइट? तो मैंने कहा कि तुम जितना भी अपना सर मारो इधर on the walls, bang your head on the wall. This is head banging with the Shias also, because there's someone who would not just see. अब मुझे भी like अरन रा ने जो बोला,
atheist है. I don't agree. I don't agree to everything this atheist man say, but I agree to it reach home. What hit me? Oh, what Arun Roy is saying is that God, if He's merciful, what this this revenge, and you are that man is saying no for justice sake. He's in a down here, bichara, right? Justice. God is merciful, and our God is just, and our God is so he take put the revenge. No, no, put sorry punishment. He give punishment forever and ever and ever. बाबा इतना समझाया एथियस लेकिन समझते नहीं है नहीं समझते. वो बेचारा चुप हो गया. उसको उनके भी लोगों ने शायद आके कहा इधर लाइव चैट में कि अरुण रा यू आर बीइंग बाइपोलर. calm down, calm down. His own people may have said this on the live chat. Sorry, excuse me. देखें, मैंने एक कॉन्ट्रडिक्शन आयत दो दिखा दी. अभी आप बोलेंगे उधर लेके जाएंगे कि मैडम श्याम पे यही तो हो रहा है. शिया भी इधर आएंगे कहेंगे नहीं नहीं तुम उधर जाओ उधर देखो इधर हमें ये नहीं दिखाओ. यू सी दिस इज काइंड ऑफ जब मुझे न्यूरोसिस हुआ था ना टीचर से जुदा किया था. Neurotic. It's got to do with emotional neurosis. Like you will not be able to concentrate on one thing. उधर जाओगे फिर उधर जाओगे फिर उधर जाओगे फिर उधर जाओगे. मैडम जी तो मैं एथियस्ट बनूं या क्या बनूं आप बताओ प्लीज. फॉर व्हाट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन इज दिस. मैं आपकी माँ हूं या आपका माइंड हूं. मैं आपको डिक्टेट करूं. Nanga Lal is better than the Muslim woman who. Nanga Lal. Advice? No. There's no way I'm going to give advice. You use your mind. ओहो. अब एथियस का मैंने एक पॉइंट बोला. ये देखें ये शिया भी ऐसे आ सकते हैं. हाँ मुसलमान भी ऐसे आ सकते हैं. मैडम जी तो मैं एथियस. दिस इज नॉट द पॉइंट व्हाई आई सेड अबाउट आयरन रा. एक पॉइंट मैं ले रही थी. मैंने बर्ट्रेंड रसल को. आप क्यों डरते हैं इसमें कि मैं क्या एथियज्म में चली जाऊंगी कि खुदा मुझे कभी माफ ही नहीं करेगा. मैं अभी लेस्बियनिज्म में चली जाऊं तो तुम्हारा खुदा मुझे माफ ही नहीं करेगा. अपने आप को देखो. शराब पीते हो. जुआ कजीनो में जाते हो. हम्म. तवाइफों में जाते हो. ठीक है अडल्ट्री नहीं की लेकिन तवाइफ में जाते हो. नहीं मैडम जी. अच्छा ये कुछ नहीं कर रहे हो तुम. दो दो शादियां की हैं. शादीशुदा हो. आर यू मैरिड और आर यू सिंगल. ऐसे शिया अगर मेरे पास आएंगे आई बी ब्रेकिंग आई बी गॉन केस. तो आप आपका कोई दोस्त है शिया. मैडम जी अनमैरिड. जी अच्छा. जी आपका बहुत रिस्पेक्टफुल वे एक तरफ से तो. मैडम जी इंडिया में दो मैरिज अलाउड नहीं है. अच्छा वेस्टर्न वर्ल्ड में अलाउड है या नहीं है.
तो ये है कि देखें, मैं आपको देख रही हूँ कि शिया भी ऐसे आ सकते हैं। और आप क्यों डर रहे हैं मेरे बारे में? किसके बारे में डर रहे हैं? मैं आपको मारूंगी। तो ये आसान, एक तरफ से सूर्य आला में है, अल्लाह विल मेक इट इजी फॉर यू, द इजी वे। सूर्य ताहा में है, वी हैव नॉट सेंट डाउन टू दी दिस कुरान दैट thou should it be distressed, राइट? आपको इंग्लिश आती है? इंग्लिश आती है नंगालाल? नंगालाल जी, आप एक ओल्ड वुमन, 54 ईयर ओल्ड वुमन के साथ क्या कर रहे हैं? जी मैडम जी, थोड़ी थोड़ी समझ। नहीं नहीं, सॉरी, इधर आप वेस्ट करें अपना टाइम। टाइम वेस्ट नहीं करें। ये मेरी एडवाइस सुने, ये एडवाइस दे सकते हैं कि अपना टाइम इधर वेस्ट नहीं करें और चले जाएं। जब आप ये एडवाइस सुनेंगे, मैडम जी आप बोलो समझ लेता हूँ। ओके, तो ये आयत समझ रहे हैं, कुरान की आयत? हाँ, ये क्या है? आप क्यों शियाओं के बारे में इतना परवाह करते हैं? यू सेड दैट व्हाई आर यू शिया, व्हाई? आप तो शिया के वो लगते हैं, बड़े हमदर्द। शियाओं के बड़े हमदर्द लगते हैं। यू सेड दैट व्हाई हैज देयर बीन अ लॉट ऑफ oppression against Shia zulm. सुन्नी भी दोस्त हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं शिया। अच्छा, क्रिश्चियन भी दोस्त हैं, लेकिन आपको शियाओं के बारे में इतनी हमदर्दी क्यों है? सिख भी हैं। नहीं नहीं, लेकिन शियाओं के बारे में आपको क्यों इतनी हमदर्दी है? मैं शियाओं को दिखाना चाहती हूँ ये, बिकॉज मैं तो शिया थी। लेकिन आपको क्यों इतनी हमदर्दी है? इसी मैंने नहीं बोला कि शिया पे बहुत जुल्म हुआ है, आपने इधर अभी बोला है। अभी मैंने नहीं बोला, आई डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट शियाज, दैट मैं कहाँ शिया, मैं तो ऐसा ही बोल रहा था मैडम जी, ऐसा ही बोल रहा था, लाफिंग वट एवर दिस इज। तो देखें भाई साहब, माफ करें मुझे, मुझे माफ कर दें, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपकी। आप चले जाएं, यहाँ से चले जाएं। अपने आप पे थोड़ा जुल्म नहीं करें। अपने आप पे क्यों आप जुल्म कर रहे हैं? अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यू आर ruining your you know wasting your time here. मैडम जी, क्योंकि मैंने सुना है न्यूज़ में उनके साथ गलत होता है, गलत होता है। मुझे शिया अच्छे लगते हैं। अच्छा। हम्म। नहीं नहीं, न्यूज़ में सुना है कि ये आप किसी शिया के लिए काम कर रहे हैं। किधर सुना है? हाँ, ये बहुत अच्छी पॉइंट है नंगालाल जी। नंगालाल जी has brought out the best point ever that I should have, had he not asked me this now. Because Shias, they are taught to do zulm on themselves and also to invite zulm.
You see, this is, we are taught कि अगर कोई दूसरा जुल्म नहीं करे, if someone doesn't do zulm on you, do zulm on yourself. You have to do it violently. Strive and struggle in the cause of Allah. Striving in the cause of Allah. You see this Surah Tawbah at 19. अगर उनको बोलो कि आराम से रहो बाबा, अपने आप पे जुल्म नहीं करो, दुआ यमनी पढ़ो ना, अभी इतना अपने आप पे जुल्म किया है कि उनको बोलना पड़ता है कि देखो, दुआ यमनी भी है कि अपने नफ्स पे जुल्म नहीं करो, नफ्स को छोड़ दो। नफ्स का नॉलेज जो आपको मिला है, स्पिरिट का नॉलेज नहीं मिला है। सही का मैडम जी, जस्ट लाइक इन ईरान दे आर ऑप्रेसिंग देयर ओन पीपल, बहुत ज़्यादा। मैं, यू जस्ट शट मी अप, आई एम शॉक्ड। या यस, अब देखें क्या होता है, डिवोर्स केसेस, look at the human rights violations, right? आप छोड़ें अमेरिका को या जो दूसरे सुन्नियों को भी छोड़ दें जिन्होंने शियाओं पे जुल्म किया है, मारा है, ये किया है, शहीद किया है, जो भी किया है। आप देखें कि हम लोग ना नफ्स को जानते हैं ना कुछ, बस स्ट्राइव इन द वे ऑफ अल्लाह। इधर बेचारे वो वाटर दे रहे थे, अभी देखें इधर ये जुल्म है, जुल्म है। अपने आप पे आप जुल्म कर रहे हैं, स्ट्राइविंग इन द कॉज ऑफ अल्लाह, जिहाद कर रहे हैं। एक तो जिहाद अकबर है। दुआ यमनी आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, ये शियाओं की दुआएं। मैं भी अपने आप पे जुल्म कर रही हूँ, to save the Shias, some of them if they can come here. नहीं नहीं, बेचारे पता नहीं किसको, not the people, the state, ulamas are doing zulm, किसी को रहने ही नहीं देते आराम से। There could be another way to do, to have control over your nafs, your soul. ये शिया की भी है, let me show you. इधर लिखा है फिर, जुल्म करके जिहाद अकबर, स्ट्राइविंग इन द कॉज ऑफ अल्लाह। अब फिर ये पढ़ें, universe, there's no God, you and I am your, you, I am your believer, I've oppressed myself, I confess my sins। यानी मैंने अपने नफ्स पे जुल्म किया है। अब एक बात पे रहे ना, कौन सा जुल्म किया है नफ्स पे? क्या ये जुल्म नहीं है? नफ्स की नॉलेज भी पता है, नफ्स को यानी जिहाद करो, स्ट्राइव। यानी मैं आपको कैसे बताऊं, शैतान ऐसे रूप में आया है, ऐसे अच्छे रूप में, और बेचारे शैतान के सब फॉलोअर्स कह रहे हैं कि हम पे जुल्म हो रहा है, शिया हैं हम, लेकिन हम जुल्म बर्दाश्त करेंगे। हम इमाम हुसैन की मजलिस में जाएंगे, भले उधर बॉम्ब ब्लास्ट हो, हमारी कंट्री पाकिस्तान हो, सही तरह वो तो आ जाते हैं, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हों या पूरा वो पता नहीं कौन बेचते हैं वो, एक है, what do they call that, security guards, हम तो जाएंगे। देखें इस्माइली ऐसे नहीं करते, आराम से बैठे हुए हैं। थोड़ा सा इनके परदादा ने, उनके इमाम हिज हाइनेस आगा खान द थर्ड ने कहा कि थोड़ा वो क्या बोलते हैं, मेंशन होगा इमाम हुसैन का, वो एक क्या बोलते हैं इनकी लैंग्वेज में, इन पाकिस्तान डे विदाउट बॉम्ब ब्लास्ट इज डे वेस्टेड। हाँ, यस,
हाँ, so very good point, Nangalal ji, that देखिए striving in Allah's cause भी कह रहे हैं equal नहीं है. I mean, जो पानी दे रहे हैं बेचारे इतने डिसिप्लिन्ड. अच्छा, पानी पानी दे रहे हैं, मेंटेन कर रहे हैं अल्लाह का घर, मेंटेन कर रहे हैं अल्लाह का घर. नो नो, यू कैन नॉट मेंटेन अल्लाह हाउस. इधर नहीं लिखा है कि डॉटर्स को मार रहे हैं इसलिए यू कैन नॉट मेंटेन अल्लाह हाउस. इधर नहीं कह रहे हैं कि डॉटर्स को अलाइव बरी कर रहे हैं, इन्फेंट डॉटर्स को, कि यू कैन नॉट मेंटेन अल्लाह हाउस. सूरह तौबा की आयत है, कहाँ है? इधर कह रहे हैं कि do you consider providing water to the pilgrims and tending the sacred mosque, yani taking care of the sacred mosque, equal in worth to believing in Allah? फिर जो यजीद ने करवाया, you see, फिर एक हमने, फिर वो एक बेचारा यजीद बन गया. उनकी माँ क्रिश्चियन थी, क्रिश्चियंस को जबरदस्ती जिजिया. I mean, doesn't make sense कि Adam and Jesus Christ are the same. वो एडम कब बना था अल्लाह के हाथों से, माइट एंड पावर से? जीसस क्राइस्ट मिराकुलसली आया था थ्रू अ वुमन. हाँ, बहुत अच्छा. नंगा लाल कह रहा है, मैडम जी, पहले मैं सोचता था मेरा नाम नंगा क्यों रखा, पर इट्स बेटर बीइंग इन वेल. डेफिनेटली, 100%. तो जुल्म अपने आप पे हम लोग कर रहे हैं, स्ट्राइविंग इन द कॉज ऑफ अल्लाह. Not only believing in Allah in the last day, but striving in the cause of Allah. यानी अपने नफ्स पे आप ऐसा जुल्म करें, यानी उनको अपने नफ्स को कोरे मारे विथ योर माइंड, फाइट. अब वो डॉक्टर पिलाय से मुझे पता चला कि ये फ्रंटल लोब है ना, इनको ब्रेन, ये हिंदूज को ब्रेन के बारे में पता है. ये फ्रंटल लोब जहाँ इंटेलेक्ट, रीजन, तभी तो हाफिज ने कहा कि यू लव, यू कांट यूज रीजन. Reason is just a drop, mind, intellect, just a drop in the ocean of love. वो फीलिंग्स जो लव देता है वो आप नहीं कंट्रोल कर सकते अपने माइंड के साथ. बट यू कैन डू सर्टेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ब्रीदिंग. विथ योर ब्रीदिंग यू कैन कंट्रोल, आराम से कंट्रोल योर सेल्व्स. आप अपने डिजायर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, अदर डिजायर्स, ब्रीदिंग के साथ. यू सी, Nangalal says right, madam ji. आप जाएं ज़्यादा, आपके पास इतना ट्रेजर है, आप जाएं हिमालय या कभी जाएं उधर अपने गुरुओं के पास जाएं. दैट इज़ माय एडवाइस. टेक एडवांटेज ऑफ योर स्पिरिचुअल हेरिटेज. इधर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरे साथ. आप जाएं हिमालय, इंडिया जाएं, उधर देवी किसी टेम्पल में जाएं. अगर चाहिए तो ज़्यादा सीखना है, हिमालय माउंटेन्स में जाएं.
उधर आपके गुरु, मैम आई लिसन टू सतगुरु एंड ओशो और ऑसो। ओके, सतगुरु ने क्या कहा है? ओ, सतगुरु ने कहा, तो ये जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, सतगुरु इज रियली गुड। A Sadguru is the best you have in India right now, and Shri Ravi Shankar ji also तो है ही नहीं, सदगुरु तो है, राइट? सदगुरु ने कहा कम टू मी, इनर इंजीनियरिंग करवाएगा, आपको मदद करवाएगा, आपको हेल्प करेगा। मैडम जी सन्यास लेके हिमालय चला जाऊं, सन्यास लेके, नहीं नहीं ऐसे ही आप जाएं, सन्यास लेके क्यों जाएंगे? आप ऐसे ही चले जाएं हिमालय किसी गुरु के पास। लेकिन आपको तो हिमालय जाना ही नहीं है, इससे कि आपके पास शिव का कौन है, सदगुरु कौन है? जब शिवा आ गए हैं आपके यहाँ अभी वापस, अभी कल की अवतार का टाइम है, जब शिवा आ गए सदगुरु के रूप में, राइट? शंकर हैं, श्री श्री रविशंकर जी, वो तो बहुत प्यारा, बहुत प्यार से बात करता है। एक दो वीडियोस मैंने देखा अभी जो मैंने ऑब्जेक्ट किया, लेकिन श्री श्री रविशंकर जी है। शिवा के मुझे तो ख्वाब में आया था कि सदगुरु शिवा है। मैं तो लाइक मुझे ख्वाब में आया था कि तुम्हें शिवा ख्वाब में आएगा। अभी तक मैं लाइक हिंदू रिलीजन में पूरा समझी नहीं हूँ, बट आई लाइक व्हेन आई लिटिल स्मॉल थिंग के इधर उधर, और लाइक दैट, नथिंग मच। मैडम जी आप इतना कैसे जानती हैं? बिकॉज सोशल मीडिया है, अब सदगुरु आ गया है, मेरे ख्वाब में आया था कि सदगुरु, सदगुरु इज शिवा। बिकॉज मैंने एक इस्तिखारा निकाला था, बाबा कौन है, उधर आया था ऑनलाइन, ऑनलाइन चीज़ें हैं उनके अभी इंडिया जाने की ज़रूरत भी नहीं है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। सदगुरु के वीडियोस, ही सेड पॉर्न में आप नहीं जाए, मेरे वीडियोस आप डाउनलोड करें, शेयर देम, अपलोड देम, and sparingly share them. No copyrights infringement. So you see, unfortunately, the Shias, because of this ayat, these kind of ayats in the Quran, क्या बैठे आराम से, and Surah Fat ayat, Baduans, they cannot sit with their family and their uh, Badu and Muslims. They said, we don't want to go and fight or help you, this messenger. उधर उनको इतना ऐसा बम्बू मिला, we are busy with our family. You know what bamboo is? Blast. Okay, you will be fighting such a military might. तुम लोग hypocrites हो, ये लोग ये हैं. They changed the word of Allah. Okay, madam ji. So, Nangalal, you see? हाँ, ये मैडम जी आए कभी इंडिया हमने with family. It will be pleasure to host you. Thank you so much, Nangalal ji. I'm so I cannot say I'm so touched. बहुत बहुत inviting me. It would be a pleasure to come there. But right now, I cannot go anywhere. I wish I could go to London. So, thank you so much. God bless you.
And your family members much. So grateful. I mean, you are so great, and I'm grateful for that. Right? Thank. अच्छा, ये पता है ये जो आप बना रहे हैं ये ओम है. आफत. ये आफत नहीं है which we thought in Karachi, but this means om. ये किसी के किसी you know this lady, she was German. She's written a book long time ago. I had this book in Karachi. I bought it. So she came under a truck accident, and then God started to communicate with her. Then her husband also left her, thought that she's weird. She's going weird on me. So after she came under the truck, and she survived. And then she survived to write a book about the super conscious, right? So she was saying something about this, putting the thumb and the finger together. We say आफत, excellent, great, perfect, ऐसे करके ना. लेकिन जो इस औरत ने कहा, this lady, she wrote a book, I read a book, कि you know ये इसका मतलब है ओम. और अगर एक इससे you can take divination, you can ask, put put your left finger forward, like first finger and the thumb together, forefinger and the thumb together, ask a question, and with your other with your other one finger and thumb, try to open this om. So let's say I say that is Nanga Lal sent by so and so, right? A Shia, right? Even though let's say you're hiding or whatever, I suspect you, and I can ask this. If this doesn't open, it means yes. If it opens, it means no, you are not sent by Shia here. तो इसका मतलब है ओम. ओम. You know when the Indians, they put what is this called? When they put their finger and thumb together, what is it called? और आपका कान देखें, कान देखें. This I learned from someone when I was watching Swami Rama's, I think, videos on YouTube some 6 7 years ago. यहाँ पता नहीं किसी, no, another Hindu, maybe. Look at your ear, maybe from another Hindu website or something. Look at your ear. It's in the shape of a om. जैसे वो देवानगरी संस्कृत में शायद ओम लिखते हैं ना. नंगालाल, आप ऐसे बैठ के क्या हुआ? What is this? Yeah, like that posture. Yeah, doing yoga. Yeah, meditation. Sorry. Yeah, in meditation. Yeah, this one. When you put your fingers together, उसको क्या बोलते हैं? Ma'am, I have one question. Can I ask? Sure. Sure. Ask. What question is it? Waiting for your question. तो ये है कि मेरा खून वो कहते हैं ड्राई ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप इंडियंस मुझे इतना वो कर रहे हैं कि शियाओं का सोचे ना, शियाओं पे इतना जुल्म हो, तो शिया क्या कहेंगे? आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प द शिया मुस्लिम्स कम आउट ऑफ दिस. मैम, व्हाई मुस्लिम्स हेट जूस so much? I don't know. I don't know why. Because you see, I saw the ayats.
in the Quran. That's why they hate Jews. And because of that, Israel and Palestine also problem. I'm also always curious. I see. So I cannot answer this question properly. They say Yahudiyon ki sazish. Yeah, they say that. Even my father said in America, lobbying of the Jews is there. So you know what is the political lobbying of the Jews in America? तो ये और कहा है कि इमाम मेहदी जब आएगा फ्रॉम द ऑकल्टेशन, जब जाहिर होंगे तो एक जू लेडी बाद में उनको मार डाले. But I had great neighbors Jews uh, in the same where. अच्छा लेकिन आप ये देखें कि ये शिया जो है ना, मेरा खून ड्राई हो जाएगा लेकिन ये लोग नहीं समझेंगे. एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देख सकते, एक कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देख सकते हैं. Jews are among, Nangalal says, Jews are among the richest and powerful community in America. हम्म. हाँ बस एक हमारा था वो रिच, वेरी रिच, गोकुल फैमिली का, अब्बास गोकुल में. एटलीस्ट ये जूस अपने आप को हेल्प करते हैं, राइट? दे डोंट फील जेलस ऑफ ईच अदर, you know. Madam ji, you are hope for your Shia community? No, I will die someday soon. I'm no hope. Please, don't put hope on me. I want to kill myself recently. अभी तो पता है गुरु भी मुसलमानों का, श्री श्री रविशंकर जी ने पता नहीं क्या बोला है किस मोहम्मद के बारे में. वो मैंने डिस्टोपिया टू रीजन से सुना था. उनके पास जो उनका सब पूरा म्यूजिक ये वो क्या कहते हैं. But then I was told, then he said that he's gone for exams or something. God knows. वो आते थे पूरा वो हैंडल करते थे. So उन्होंने क्या बोला कि मैडम जी why? मैडम जी, you are hope for your Shia community. No, no, I am now hope. I'm a hopeless gone case. Because मुझे नहीं लगता आप लोग भी. वो कह रहे थे कि श्री श्री रविशंकर जी ने बहुत अच्छा कहा है प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में. एक उनके बुक में लिखा है या क्या, पता नहीं कौन सा प्रॉफिट मोहम्मद. लाइक वाज ही टॉकिंग अबाउट, एक दफ़ा कहा श्री श्री रविशंकर जी ने कि प्रॉफिट मोहम्मद किल्ड हिज अंकल, राइट? वो डिसबिलीव ऑफ पॉलिटिक्स पेगन था. फिर अभी तो आपके बेचारे गुरु सदगुरु भी ऐसे ना हाथ जोड़ के प्लीज दिस दैट. मोदी जी भी फॉर मुस्लिम्स हैं. माय होप इज डिमिंग डिमिंग डिमिंग.
देखें, आप भी एक ऐसे हिंदू कि यू नो श्याम पे इतना जुल्म क्यों हुआ है। तो मैं भी ये सोचती थी कि लाइक अल्लाह क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा। Muslims hate Modi ji. No, no, yes, yes. Muslims were kind of scared that Modi ji would, this message is held for review. So, Nangalal, आप इसको थोड़ा different way में put करें. I don't think the community of, the community standards here, they may dislike Modi ji, तो आप थोड़ा different अलग तरीके से put करें because it's come that this message is held for review. uh, Maybe against politically not right. Thank you for the message retraction. Okay. No, मेरे तो होप्स जिम हो रहे हैं because डिस्टोपिया टू रीजन का भी चैनल ना वो दिखा रहा था कि इट्स ऑल अमेरिकाज फॉल्ट एंड ऑल दिस। अब फिर मैंने उनसे पूछा कि बट कैन वी डू दिस, लाइक शो शेयर दिस। नहीं, मेरा तो अभी तो हिंदूज भी शियाओं को मदद करते कब से, और मुसलमानों को इस्लाम मुसलमानों को मदद करने लगे हैं, रहम करने लगे हैं। शियाओं पे तो हमेशा रहम करते हैं हिंदू, मोर देन द सुन्नी मुस्लिम्स। सॉरी मैम, इट्स ओके, यू डोंट नीड टू फील। थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड मुझे नहीं पता, I could say that I hate this that, but I think it's against the standard, YouTube standard, community standard, and not politically right to put it that way. अच्छा, तो अभी क्या करें? Do you consider providing, यानी हमारे शिया, आई डोंट नो हाउ टू से दिस प्रॉपर्ली, मेरा तो ऐसा लगता है कि मैं लड़ रही हूँ दुनिया से, शियाओं से अगेंस्ट, और ये, और बोरीज भी, वो डिस्टोपिया टू रीजन वाला, वो बोरी था, एक्स बोरी है, पता नहीं क्या है। तो उसको भी ये है कि ईरान में पॉलिटिक्स आ गया ना, अमेरिका करवा रहा है, एंड हैव डन इट इन द पास्ट। बस यही है, ये नहीं देख रहे हैं कि कहाँ डिवोर्स, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कहाँ हो रहे हैं। अमेरिका तो आएगी, बॉम्ब ब्लास्ट करेगी हम पे। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दैट डे, राइट? इवन सो हम सब कुछ डस्ट में चले जाएगा, जैसे किसी भी मुसलमान कंट्री को प्रोग्रेस नहीं करने देते हैं। इराक ईरान को इन्होंने ही लड़ाया, कहते हैं ना, दिस, राइट मैम? तो ये है कि खुमैनी को भी मैं देख रही थी कि CIA ने तो नहीं लाया। तो ये हो रहा है, ये हो रहा था लॉन्ग टाइम अगो। तो अभी ये है कि ये देखना है। मैम, डू यू लाइक अमेरिका? आई लाइक द अमेरिकन पीपल, यस। I haven't been to America. I don't know how America is, but it looks good. They have so much. I was listening to Arun Ra, a reminder. America is very clever. No, no. Yani the government, you mean? हाँ, बहुत कनिंग और ऐसा है ना, अपने मतलब के लिए, सेल्फिश एंड, अमेरिका इज वेरी वेरी जालिम। वो जैसे ये हमारे दुश्मन है शियाओं के, माय फॉर्मर रिलीजन। वो कौन थे? एक जवेरी था ना, ये तो टेररिस्ट करार गए, इवन थ्रू द सुन्नी, आई थिंक बाय द सुन्नी कंट्रीज लीडर्स। ये एक अलकायदा का जो लीडर था ना,
ये अमेरिका ने उसको मारने के लिए या क्या बेचारे जवेरी बेचार इस पे भी बहुत जुल्म हुआ, इसकी फैमिली अल्लाह, इसकी बेटी। अच्छा ये हमारे अगेंस्ट हैं, लेकिन फिर भी मुझे लाइक आई couldn't read this. Be difficult. The leader तो ऐसे मारा कि उसकी बेटियों को भी, डॉटर्स, बच्चियों को, लिटिल चिल्ड्रन को। Ayman al-Zawahiri, he has passed away or he was killed. तो अमेरिका की गवर्नमेंट जो है ना, वो बस मैं क्या बोलूँ, मैम योर टॉप फेवरेट कंट्रीज, प्लीज नंगालाल, मेरे countries, I just love London city, where I've been. It's my second home, London, my favorite city. UK, my favorite country. Yeah, London. तो ये अमेरिका ने ना, ओह, ऐसा बेदर्दी से, I think America has so much talent, like freedom. It was the so Aaron Raw. When I heard him, I would like to appeal to America that you have nothing to feel, like you have so much. इनके जो poets थे, जब मैंने वो movie देखी with honors, I came to know about their poets. They can really help humanity. इनका mind free है ना, they can think, they can be atheists, it's a free land and all this. I just hope they bring some honesty in themselves. इनके पास इतना talent है, musicians. जूस का जो टैलेंट है, डॉक्टर बसकरन पिल्लाई कह रहा था, इवन ही अग्रीड, जूस के पास बहुत टैलेंट है, more greater than Christians of America, greater than Christians. Christians are more, in charity and charitable acts and like Mother Teresa and all this and missionary work भी उनका होता है, लेकिन जूस के पास जो टैलेंट है, जो माइंड है ना, वो खुदा ने किसी को भी नहीं दिया, भगवान ने या शायद हिंदूज को दिया होगा. So how America killed his family, his daughters, young children. Oof, don't ask. उनका क्या कसूर है? लेकिन ये क्या कह रहे हैं, अजवारीज क्रिटिसिज्म, ये फैक्ट्स देते हैं. मैम, व्हाट्स योर टेक ऑन इंडिया surpassing UK to become fifth largest economy? I mean, if they deserve it, what can I say? If they deserve it, I have nothing to do with. Good for them. Great. I wish India the best. It should come out of. Wow, that's good news that it's coming out of poverty and all this. Population density in India. So, it's going to help its poverty-stricken people. बहुत अच्छा है. Very good. There's one thing I don't like.
that India and China are not getting along, and there should be no competition between India and China. They should all come and live. Sometimes China wins in advancement. China is very clean country compared to India, right? तो ये बस मुझे थोड़ा इंडिया का अच्छा नहीं लगता है against China. Okay, this I can't find that. Can't do multitasking while talking to Nanga Lal and here on live stream. I can't find it anymore right now. मुझे कुछ हो रहा है. Can't. But please see this. पता नहीं. I think my hope is dimming because when I find people like, you know, कह रहे हैं कि आप ये नहीं, यानी discouragement आती है ना, मेरी लाइट डिम हो रही है. आई डोंट थिंक आई कैन शो द शिया. देखिए एक होता है स्पिरिचुअल जो डिसेप्शन होता है ना, वो भी ख़राब होता है बिकॉज I don't know. Yeah, maybe murder. I don't know if someone murders my beloved, I lose them. I don't know how I will take it. But treason में जैसे ना मैं समझती हूँ कि सिसेरो ने कहा है कि a murderer is less to be feared. और मुझे नहीं लगता शियाज मेरा समझेंगे because every one of them is like dystopia to reason. I had this thing with, you know, that आप लोग क्यों पॉलिटिक्स उधर ईरान पे वो ह्यूमन राइट्स कुछ इधर उधर ईरान में. मैम मुझे आपका शागिर्द बना. नो 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 शागिर्द डिसाइपल. नो 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 नो. यू आई वांट यू टू बी योर ओन मास्टर. नो one's शागिर्द. नो नो नो. अगर आपको शागिर्द बनना है, शागिर्द, तो आप जाएं उधर परमहंस विश्वानंद. वो मास्टर आ गया आपका, कल की अवतार प्रेमा अवतार आ गया. परमहंस विश्वानंद यूट्यूब पे चेक करें, वो जर्मनी में है. अभी तो मॉरिशस में है. वो जानता है कि क्या है. ही विल यू नो क्या क्या. लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि कोई भी किसी का शागिर्द नहीं बने. इफ यू फाइंड योर गाइड विद इन यू and you are humble and you don't hurt people, और ये भी नहीं आप स्प्रेड करें ये आइडिया कि आप अपने नफ्स पे जुल्म करें तो आपको खुदा मिल जाएगा. अपने नफ्स पे भी जुल्म नहीं करें. ये सब मिस गाइडेंस है. मोहब्बत करें मोहब्बत. मैं तो चाह रही थी कि शैतान को बोलूं लेट्स शेक हैंड्स. कम आई बी फ्रेंड्स. Friends, let's be friends. Calm down, Shaitan. What happened to you? I tried to say, शायद खुदा ने ऐसा नहीं कहा शैतान को. मुझे तो कहने दो. एक वक्त ऐसा आ गया था कि मैंने सोचा कि ये ईवल वीवल दुनिया में खुदा ने नहीं बनाया है, ना शैतान, ना किसी जिन से आया है. ये ह्यूमन बीइंग से आया है. ह्यूमन बीइंग्स हैव मेड रिलीजन गॉड एंड ऑल दिस. एक साइक में एक प्रॉब्लम आता है और थोड़ा हेल्पलेसनेस आती है तो यू नीड गॉड, हायर पावर. यू आप जाएं डॉक्टर दीपक चोपड़ा, हाउ टू हील योर सेल्फ. उधर जाएं देखें. अगर आपको किसका शागिर्द बनना है तो आप भक्ति मार्गा को ज्वाइन करें. क्या पता शैतान आपसे मिलके ही टर्न्स इनटू गुड गाय. पता नहीं मैं हूँ या नहीं हूँ, लेकिन डोंट यू थिंक दैट
God did the wrong thing, putting everything on शैतान. देखिए आग तो आग है, फायर विल बर्न. और फायर कभी भी देखें, ये तो सदगुरु ने हमें दिखाया, ईशा फाउंडेशन का. इफ यू हैव अ लाइटर राइट, आग, या किसने कहा था, आग देखें उसको पुट डाउन करे लाइटर को, डोंट ट्राई इट, वो आग बेंड ही नहीं होती है. तो वो बेचारा शैतान कैसे बाव डाउन करेगा. अगर खुदा चाहता तो एक मिरेकल करता कि तुम अब ऐसा एरोगेंस नहीं दिखाओ, मैं तुम्हें इधर ही निप इट इन द बड, मैं तुम्हें इधर ही ठीक करूंगा. समझे, इधर ही मैं ऐसा मिरेकल करूंगा कि ये आग नीचे तुमको जबरदस्ती मैं वो करूंगा. फ्री विल देने से क्या प्रॉब्लम, इतने प्रॉब्लम हुए हैं दुनिया में, इतने प्रॉब्लम हुए हैं, जिसने भी रिलीजन फ्री विल अल्लाह ने दिया, अल्लाह इज जस्ट और यू, फिर नफ्स पे जुल्म करो, अपने स्ट्राइव हार्ड जिहाद करो अपने नफ्स पे. अरे तो नफ्स को तो समझो कि है क्या. जिहाद करने से बगैर समझे सुने जिहाद करें नफ्सों के साथ. नफ्स स्पिरिट का आपको नॉलेज नहीं मिला है. अभी देखे मैं थोड़ा ना वो कैन टॉक प्रॉपरली, कांट एक्सप्लेन. तो यू नो इधर लिखा है सिसेरो ने का ट्रीजन में तो मर्डर इज लेस टू बी फियर्ड. देखा, मैं आप शियाओं को कहना चाहती हूँ कि आप ठीक है इतने साल, फिर वो आप अपने आप को मजलूम बेवतन, इमाम इमाम रज़ा को नहीं समझिए, मजलूम बेवतन ये मेरा मौला रज़ा है, और ऐसा ना ख़त्म कर दें प्लीज़. शायद उन पॉलिथीज ने आप पे जुल्म नहीं किया था, शायद उन बदुअन प्रॉफिट मोहम्मद पे जुल्म नहीं किया था. और अभी हम इधर आए हैं, ओके, ट्रीज एंड सिसेरो का पढ़े. और अभी हम इधर आए हैं, नस्ल नस्ल दूसरों के काट के ख़त्म करके उनको निकाल के अपने घरों से रेफ्यूजीज बना दिया, उनके घर तुड़वा के भगा के. सूर्य हशर की आयत में अब देखें ये क्या ये सूर्य बकरा आयत में, तो अगर आपका नाना प्रॉफिट मोहम्मद है तो किसी का नाना अबू जहल था, अबू लहब था, और जस्टिफाइड था, जस्टिफाइड. ये किसी को नहीं छोड़ता था, इसने पता है क्या किया है. आप बराबर रिसर्च करें ना, देखें. Among people, there is a kind whose saying on the affairs of the world fascinates you. He calls Allah again and again to bear testimony to his sincerity, yet he is most fierce in enmity. ये क्या है? With this, ये एक ट्रांसलेशन है, समझ में नहीं आया मुझे. इस्लामिक स्टडीज इन्फो, यानी he calls Allah again and again, यानी अल्लाह पे तो बिलीफ है ही, फिर भी अल्लाह इसको ठीक नहीं किया है. और ये क्या है? टू हिज, what, to his sincerity in heart. What, this is a different translation, यानी अल्लाह ने कबूल ही नहीं किया उसकी sincerity. इखलास है इसमें, it says sincerity, yet he is most fierce in enmity. नंगालाल thumbs up दे रहा है. Thank you for the thumbs up, नंगालाल. Among people, देखें खुदा कैसे जालिम हो सकता है, कैसे इधर तो खुदा जालिम है, ये इंसान ये calls Allah again and again to bear testimony to his sincerity.
Yet he is most fierce in enmity. अब किसको दोष दे रहे हैं? ये क्या हुआ? Such a person tends to claim again and again that he was merely a well wisher and was simply striving to uphold what is true and right and to promote the welfare of the people rather than doing things for the sake of personal aggrandizement. जैसे इनके grandson मुनकर और नाकिर, ये देखें, आप देखें, ये क्यों शिया नहीं देखते हैं? तो सबसे बड़ा पहले आप अपने आप पे जुल्म करना छोड़ दें, राइट? जुल्म करना छोड़ दें. Now what's happened is this a 92? Let me just use mic that I have been charging. अभी थोड़ा ये mic इस्तेमाल करें. uh, the where's that mic of mine? Charge हो गया है? I think so. Enough, I think. 2 hours क्या I'm here. So I can use, sorry, just changing my mic. Where's that the USB of this mic? Can't find it. Hmm? So just a minute, please. Can't find the USB of this mic. Found the mic. Oh, here it. Uh, okay. Hope you can hear me better. Nanga Lal ji, ye, is it better now? The sound, volume, better, or is it the same? तो ये आप देखिए, ये जो है ना, so among people there is a kind who's saying on the, लेकिन इधर तो sincerity लिखी है. He calls Allah again and again to bear testimony to his sincerity. Acha. So if he's calling Allah and Allah privately or in front of people, समझ में नहीं. इसी तरह अभी तो import of Quran ayats we don't understand even the meaning. Like there's so many questions that come up. This troubles the mind. It keeps the mind like a monkey mind going. Is stuck on अपने आप पे जुल्म कर रहा है और जुल्म करवा रहे हैं. माइंड को इतना यूज करवा रहे हैं. अभी कोई अब like my aunt, oh sorry, like someone doesn't know, wasn't good, like they had some problem in life and they never studied, couldn't study Quran in Arabic, couldn't study. She left school, right? Wasn't interested. Now her parents didn't force her. She's not, she doesn't know Quran in Arabic either. Like me, I don't know Quran in Arabic, right? But she's a Shia and she loves Imam Hussein like anything. She will forsake, and she's poor, but she will go to of course, she would give anything to go to ziyarat, pilgrimage for Imam Raza, Imam Hussein.
बिकॉज यू सी व्हाई वी से दैट, हाँ, जिसको कुरान भी नहीं आता लेकिन इमाम हुसैन ने तो दिखा दिया, राइट? अब मैं कैसे दिखाऊं कुरान की आयतें जो दिखा रही हैं कॉन्ट्रडिक्शंस जिसमें मुझे मिले हैं कुरान की आयतों में. Okay, so we just compromise, like we've compromised our freedom of speech, everything we've compromised, even free thinking we've compromised. So that's it. फिर शियास कहेंगे कि this religion gave us a book, gave us a great mind, intellect. पता है क्या है काफी? Use your mind. But tell me, just a few seconds, just for a minute, just think कि Imam Hussein actually made Yazid do what he did, right? And it started from Prophet Muhammad. अब आप जालिम को चाह रहे हैं, which is really opposite of what we believe, that we should not love a zalim. जब इमाम हुसैन उनको सेव नहीं कर सका उन जालिमों को, तो हम कौन होते हैं वो दूसरी बात है ना. तो लेकिन you can't save us, they've gone too far ahead. You can't reform them. मैम आप मुझे जी मत बोला करो, ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत बड़ा हूँ. यू आर, आप बहुत बड़े हैं. डरने की क्या बात है? ईगो आ जाएगा. आप डिवाइन, आप गॉड हैं. एक्सेप्ट करें. देखें, अगर अगर आप खुदा नहीं होते और डुअलिटी होती, जिदु कृष्णामूर्ति ने दिखाया. देखें, आप कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह के ऑर्डर्स कमांड्स को आप पूरा करें. इमाम हुसैन एग्जाम्पल है सर्वेंट ऑफ अल्लाह. आपको सर्वेंट ऑफ अल्लाह का फॉलो करना है, तो फिर भी उसमें एक डिस्टेंस है, सेपरेशन है. एक आयत यहाँ है कि अगर अल्लाह व्हाट अल्लाह वांट्स टू जॉइन, जो उसको सेपरेट करता है वो क्या बनता है? जालिम होता है ना, वो जालिम होता है. आप अपने नफ्स, अपने रूह को पहचानें, नफ्स को नहीं. नफ्स को छोड़ दें. जिस दिन आपने अपने रूह को पहचान लिया, अगर आप अल्लाह के सर्च में और वाकई में अल्लाह के बंदे हैं, एंड यू वांट दैट to be a good person and all this, you don't have to struggle, jihad all the time and be a martyr or be a follower of a martyr. You can be like, for the Shias, you can be Hussein. Why not? You can be Prophet Muhammad. Oh, God forbid. But for, like the way the Shias take it, you don't have to. Yes, you may go and pay respects to the other saints and all. One avatar can go to another avatar and pay respects. You don't have to fight. You are not competing. We are all working in harmony. There's harmony. So you don't have to be scared of कि मैं बहुत बड़ा हूँ. सब बड़े हैं, सब डिवाइन है, सिर्फ आप नहीं. इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप कहते हैं ना कि अल्लाह बड़ा है, सबसे बड़ा अल्लाह है. That is the biggest power. There's only Allah, the biggest power. अब देखें अगर आप फिरौन बन जाएं या नहीं. If I tell you you are God, no, I don't tell you. I just guide you to your inner self and say अगर आपको तलाश है अल्लाह की,
and you want to you see, where Allah tells you to, commands you to do a law, there's a separation coming. जुल्म तो इधर ही हो गया है जिधू कृष्णा मूर्ति ने दिखाया है. और मैंने भी सोचा डुअलिटी प्रॉब्लम आ जाता है. डुअलिटी, आप जितना भी बोलें ला इलाहा इल्लल्लाह, I bear witness that there is no God but one Allah. एक डिस्टेंस आ गया ना, डिस्टेंस आ गया. जब तक आप अल्लाह को एक अप, अपने आप को एक स्लेव समझ, या स्लेव समझेंगे अल्लाह का. अल्लाह आपको क्या स्लेव बनाना चाह रहा है अपना? अल्लाह को क्या ये बनाने की ज़रूरत है? तो ईगो को ख़त्म करने, ये सिर्फ ईगो एंड शैतान और अल्लाह दोनों काम कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट. अल्लाह ने शैतान को बनाया है इसलिए है, ये फिलॉसफी ऑफ evil, ये क्रिएशन ऑफ this, all this is the mind that is fears ego. एक तरफ से मैं अपने, एक तरफ से एक्ट करता है कि मैं बहुत हम्बल हूँ. देखें कभी आप अगर जाएंगे अंदर, आपने अभी कहा ना कि श्याम पे क्यों इतना जुल्म हुआ. You do feel like you are not such a bad person, are you? Do you feel like you are not a bad person? एक तरफ से you feel that way. कॉन्ट्रडिक्शन आता है, you see. लेकिन मैं भरा नहीं हूँ. मैम क्या आप कुंभ मेले का के बारे में जानती हैं? हाँ मैं जानती हूँ. I've seen it in the videos on YouTube. अभी देखें ये इधर मैं थोड़ा आपको बता रही हूँ. शिया इमामों ने कहाँ हमें मिसलीड किया है, और ये इस्लाम ने हमें कैसे मिसलीड किया है. ये मैन मेड रिलीजन है आउट ऑफ फियर कि इन ह्यूमन बींग्स को कंट्रोल में रखें, दबा के रखें. देयर इज वन पावर अबव यू. अगर आप ऐसे नहीं करेंगे, पेरेंट जैसे डराती है ना, आई विल पनिश यू, आई विल हिट यू. एक लविंग वे में भी कर सकती है कि बच्चे को एम्ब्रेस करे. एक थ्रेटनिंग वे में भी बच्चे को डरा के खबरदार, वरना इधर डिफरेंट तरीके हैं, राइट. डिसिप्लिन करने के लिए, या उसको कहने के लिए कि इधर हाथ नहीं रखना, इधर इलेक्ट्रिसिटी, इधर आपको नो नो नो. तो आप उसको मारेंगे, डराएंगे, या आप उसको लविंगली सिखाएंगे. सो जाओ वरना गब्बर सिंह आ जाएगा. हाँ ऐसा डराएंगे. दैट्स शोले, राइट? गब्बर सिंह, शोले मूवी. राइट. तो अगर बच्चे को डराना ठीक है, तो आपने, आपके अल्लाह ने तो हमें बच्चा समझा है. बच्चा समझा है. आदम को भी बच्चा समझा है. सबसे होशियार तो शैतान था. इतनी नॉलेज थी, इतनी नॉलेज थी. अच्छा कभी अगर आपको बच्चों को डराना होता है कि ये फायर है, इसमें हाथ नहीं डालो, लाइक दैट, यू नो. आप उसको लेंगे और उसको मारेंगे, टॉर्चर करेंगे, क्या करेंगे? हम उसकी अच्छाई के लिए करें. So why don't we take the loving way? Huh? Why can't you tell your child that I love you a lot? उसको हक करें, उसको embrace करें, उसको हटाएं उस जगह से. बस, that's it.
टॉर्चर करके बोलेंगे कि इधर ये नहीं चाहिए, जैसे रैट्स को टॉर्चर किया था एट वन टाइम टेस्ट करने, कि इधर अगर इधर आएगा वी विल टॉर्चर द रैट। तो वो रैट टॉर्चर से इतना डरता है कि वो कभी उधर जाएगा ही नहीं। सो आर यू गोइंग टू डू द सेम थिंग विथ योर चाइल्ड? उसको टॉर्चर कर करके जब भी वो जा रहा है, इट्स फायर, लेट्स से यू हैव अ चिमनी एंड यू फायर इज ऑन and your child is crawling towards the fire and you pick him up and then you say, you know what, I have to torture him. बार बार टॉर्चर, जब उधर जाए मारो, जब उधर जाए मारो. That's the way to teach a child not to go to the chimney fire. Sahi ka, man, there's so much to learn from you. The same thing is in yourself and you know it. Nangalal ji, thank you for the heart, thank you for all this. तो देखें एक दूसरा वे है, दूसरा वे अच्छा वे है, loving way है. There's a saying I found, I was buying a notebook or something on it, that love is the best way to grow. Love teaches you. It's the best way to make another person grow. You don't need anything else, torture and torment and fear, right? Control. फिर आप बच्चे को ऐसे करते हैं, माँ बाप कंट्रोलर्स. कभी कभी पेरेंट कैन बिकम अ कंट्रोलर, कंट्रोल फ्रीक. Child can grow up to be a control freak and then do the same thing, chain reaction to their children. So we are bringing up a family of sick people, control freaks, and all this, anxiety prone, डर, डरे हुए मरे हुए. अरे कुछ दे, अल्लाह ने ये सोल्यूशन दिया है कि जिना नहीं करें, मुता. When that Swami Rama can tell you that you know, when they take their vows of celibacy, सन्यासी बनते, ये नहीं है कि वो अनहेल्थी हैं, अनहेल्थी ये नहीं है. They know how to control, control in the sense not aggressively fighting with the ये हो रहा है, ये हो रहा है, अच्छा कैसे अभी अपने आप को, not like that, but they know ways, techniques, they have techniques, yoga techniques they've been given, how to control their desires. यानी उस वो, यानी जैसे अभी एंगर आ रहा है ना, मुझे एंगर, आई एम फीलिंग एंग्री, राइट? इमाम अली ने कहा swallow your anger, anger is haram in Islam, right? How to swallow your anger. Then swallow your other desires, fearing fornication and all that. Swallow the desire of fornication, right? तो बैठ के हमें teach. You see, we are not taught even how to dialogue नहीं कर सकते. We are not taught how to take these verses. तभी तो इतना सुन्नी शिया, फिर शिया सेक्ट में भी सब सेक्ट्स है ना, शिया स्कूल ऑफ थॉट में भी सब सेक्ट्स हैं, इस्माइलीज ये वो. एंड रियली सम पीपल टेक द कुरान लाइक दिस, सम पीपल टेक, मैम, और लोग भी देख रहे हैं पर मैसेज नहीं कर रहे. अच्छा, हाँ, इधर 3 लोग हैं, एक मैं हूँ, बिकॉज आई एम हियर ओनली 2 of us, द थर्ड वन, या. तो अच्छा, थैंक यू ये बताने के लिए. नंगा लाल साहब जी, थैंक यू. अच्छा, आप देखें कि ये uh, वो एक होता है ना, यू कैन कंट्रोल योर सेल्फ, नॉट कंट्रोल, कंट्रोल, सुपरवाइज, डिजॉल्व, हाउ टू डिजॉल्व एन एंगर. Person is angry, right?
How will you fight with this? Strive against your souls. Anger is coming up. Either you let it come up. So, how to dissolve? You know how to lovingly dissolve differences between Sunni and Shia? Either I have to play very diplomatically, I thought about it, or I become honest. I'm not able to. Let me say that anger is coming up. Someone tells you it's okay. This is natural. Why do you feel angry? You'll analyze it. अभी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो कहेंगे एनालाइज करो. Or if you see, if love was the one and only thing, right? You know what love is? Let's say in our siblings, family members, there was some problem, right? I could say, let's see, my thing is that Shia, praying to God that, oh God, no, no, just look at love. May love resolve our differences. Love resolve our differences. But if the person wants to go his way, he has the free will, he can, but only love can, I feel, dissolve things, differences, bad things, bad feelings. And now, how to use this love? You see, Robert Schuller wrote a book. He's a Christian. He wrote a book, You Are Loved. What was the book he wrote? He wrote, Robert Schuller wrote, Be Happy. और पूरा वो बाइबल से he was giving verses from the Bible and all this. Be happy. तो हिंदूज क्या कहते हैं? Be in bliss. Be happy. You don't have to go after happiness. Happiness is like a butterfly. The more you, they say, the more you run after it, the more it runs away from you. They used to say, there's a quote, be happy, you are loved. या तो हमें हैप्पीनेस चाहिए ना, सक्सेस चाहिए. What do we want? Be happy, you are loved. Let's bring it in a way that I can. Robert Schuller. God loves you. His love is free. He's quoted Bible. Robert Harold Schuller. Right? Be happy you are loved. He's a Christian, American Christian, author of this book. Do you see this? He wrote this book to help people, help his Christians, help anyone who reads this book of his. They say people are going after happiness. All they need is happiness in their lives. But then comes Ibrahim. He wants a leader. खुदा बनाना चाह रहा था उनको. मैम आप नंगा बाबा को देखेंगे तो वो वीट करता है, ब्लिस में रहता है. मुझे नंगे बाबा को देखने की जरूरत नहीं है. और वीट को छोड़ दें. हाँ यही करें. अगर नंगा बाबा वीट करता है, शुक्र है मुसलमान नहीं.
ये करें, वीड करें, फीड करें, टीड करें, अपने आप पे वीड करें. And do you see that, you know, आपको पता है कि ये बंग शिवा शिवा वाले, जय जय शिव शंकर, जय जय जीव शंकर, राइट? Message, thank you. I was hoping that you would do this, Nangalal ji. But you don't see the good side of Hinduism, India. लेकिन वो जो बैड साइड है, या जो आपको अच्छा नहीं लगता है, मैं तो कहती हूँ औरतें भी नंगी फिरें, बट इट वॉन्ट हैपन because our society, Sadhguru ने कहा है कि now you have to live with the economy the materialistic world has given you, but secular, socialist, capitalists have given us. That's the way to live. You work. When you get pregnant, you have to, like take time out and then go to work again. So we have to go with this. Uh, you can't change so much. But I think अगर आप नंगा बाहर जाएंगे ना, it does no harm. No harm. ये आपकी बॉडी है, ये खुदा ने दिया है, शर्म की क्या बात है? गिल्ट तो उस एप्पल से आया था, उस ट्री से आया था. एडम के अंदर कोई शेम गिल्ट नहीं था जब वो नंगा था. लेकिन जब मैं अपने श्याम को उधर लेके जाना चाहती हूँ तो वो नहीं जाना चाह रहा. माई लाइट इज डिमिंग, my like I feel hope is dimming. पॉलिटिक्स लाते हैं कि यू नो या श्याम पे इतना इतना रहम. आप पता है जुल्म कर रहे हैं श्याम पे, इतना रहम डाल के, और मुझे फेल कर. यानी इधर मुझे डिस्करेजमेंट जो मिल रही है, बिकॉज यू ब्रिंगिंग द पॉलिटिक्स ऑफ द वेस्ट, यू ब्रिंगिंग द टेररिज्म ऑफ द वेस्ट. लगते नहीं हैं टेररिस्ट हैं. अमेरिका की गवर्नमेंट सबसे नंबर वन टेररिस्ट है. यू सी, इससे बड़ा स्पिरिचुअल एंड फिजिकल terrorist, Prophet Muhammad and his progeny say, मैंने कभी भी, he's the height, Moses और ये वो, जो Moses ने पॉलिटी स्कार्फ वर्शिपर्स के, he's, I mean Prophet Muhammad. फिर ये थोड़े ठीक हुए, जीसस क्राइस्ट केम, सन ऑफ गॉड भेज दिया खुदा ने, रियलाइज करके कि मैंने तो ये प्रॉफिट्स भेजता हूँ तो गलत होता ही नहीं है. फिर सबसे बड़ा जो चेंज किया कि अब जीसस क्राइस्ट, वो जूस ने तो कहा इज नॉट द मसाया, मसाया तो आएगा बट ही इज नॉट द मसाया. जूस को भी मुझे सेव करना है, क्रिश्चियंस को भी सेव करना है, और लेकिन ये तो सबसे वर्स्ट फिजिकल, यानी इसका तो कोई हद ही, दिस हद. Just look at 1400 years, what the Shias do. They can't be, no one has been Imam Hussein. Not even the other Imam has been Imam Hussein. Other Imam has been Imam Sajjad,
and he had to take all that. Well, his position is what I cannot say, even higher than Imam Hussein, right? In taking atrocities and going with the women folk unveiled. But yeah, it's the height of deception. This religion, height of deception. यानी हमें हद हद नहीं है. जैसे इसको पोर्ट्रे किया है ना, किसको संभाले जैनब, किसको सदा दे जैनब. हैरान परेशान. और करबल से शाम आई, भरती धुआं जैनब, मुंह पे नहीं थे नाले, करते थे शुक्र सारे. मुंह पे नहीं थे नाले, no complaint, and they all used to give thanks to Allah. करते थे शुक्र सारे. करबल से शाम आई, from Karbala to Sham. पढ़ती दुआएं जैनब, reciting prayers, supplications. और कहते हैं इस सबर का, यानी जो अहलल बैत का सबर है, पेशेंस, is beyond anyone, right? The atrocities, the aftermath of Karbala. और इधर सूर्य हशर की आयत में अभी एक सिंधी खोजा हमारे, एक्चुअली इट्स पक्की, हमारा तो सिंधी खोजा है, बट देयर इज अ मर्सिया इन सिंधी के, you know, they didn't care about water, thirst, nah, no, no grave thing, what their bodies, what, how they will be buried, what, right? No care, because, they were just doing this for God and to save humanity. Now look at this. No one, no Shia ever lived. Maybe, oh, maybe he was called infidel and put in, killed. The quiet ones, atheists. I know there was a Shia. I know uh, he was an atheist, but he couldn't say it, right? His sons told me that our father is an atheist. His wife a Shia, and his parents Shias, comes from a Shia. He came from a Shia family. It's no more. He was an atheist. Once I told someone that, you love Imam Hussein. They go to cry for Imam Hussein. One thing I realized is, if you're a Shia like this, you know, you'll cry on Bibi Sakina, you'll cry for Imam Hussein, you'll cry for Ali Akbar. So much, huh? You'll cry for justice to get what, right? Because you don't care. If a person is in the hospital, someone told me, the second day we will be tired. 1 week, okay. 1 month, okay. After 1 month, we'll say, let him go. Who cares? This, a Shia tells me, right? और ज़ियारतें, he recites, अच्छा, मुहर्रम के लिए वो तैयारी होगी, क्या नहीं. Anyways, I've already said this. So
What is the problem here is that there's also that if you don't think you are God, that I'm sorry, you're going to forever be doing zulm on yourself, struggle, 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 and when you get like do go in sajda 15 half an hour, keep doing this. You may have a connection with God. वो मंसूर अल तो मुझे नहीं समझ में आ रहा मंसूर अल if you say oh I'm one with God, Imam Mahdi could get you killed. What he did to Man, उसको कहा कि ये बागी ये वो है मंसूर अल हलाज haram. No one can go to God without us Ahl Bayt. We say your prayers, your fasting, this and that, but you cannot reach God without Imam Mahdi, the true one God, where you don't even call him the Son of God. ये भी नहीं आएगा शिरक ही नहीं होगा. There's not an ounce of shirk in this. So only through these pure five and pure five to put together, you have to love them, you have to obey them, and through them only can you find the true God. वरना इधर उधर हिंदुओं में बाबाओं में तुम लोग गर्क हो जाओगे, लेकिन तुम लोगों को वो ट्रू गॉड नहीं मिलेगा. Everyone has made God. ह्यूमन फॉर्म में आया था और ये हुआ था, जस्टिस नहीं हुआ. So you only will get the true God through the Ahlul Bayt. Go through them. And if Imam Mahdi says that this person is an infidel, ये अना अल हक नहीं है, they can get you killed, executed, because you will be misguiding others. That through someone else you will not find the true God. और शिया इमाम मेहदी ने जुल्म किया मंसूर अल हलाज पर, ये नहीं देखते, ये नहीं देखते हैं. और ये मैं दिखाना चाहती हूँ कि तुम लोग अपने आप पे जुल्म कर रहे हो इस रिलीजन में रहने से. आई विल बी executed by the Shias. Duality. My goodness. So calling yourself a servant of Allah or even the son of Allah or the is duality. It's still duality. What will happen in this duality? Connection will take place. You see, but it's easy that if you see that you are God, God should have made it. There's no other way. Logically, I just don't know how to put the premises and all this properly to tell you philosophically, logically. Not philosophically like out of reality, but bring the logic intellectually, then bring it into you that you are God. If you don't realize this, there are people, false prophets making there's a lot. फिर हम मौलाना साहब आज हम ऐसे करें या वैसे करें. समटाइम अभी पहले कहा नेल पॉलिश की दो कोट्स के साथ हम नमाज पढ़ सकते हैं मौलाना साहब. टू कोट्स ऑफ नेल पॉलिश. नो मौलाना साहब हम कैन वी विथ वन कोट ऑफ नेल पॉलिश प्रे. ऐसा हो जाता है.
और फिर कोई आके कहेगा आई हर्ड कि ये नेल पॉलिश के बगैर या नेल पॉलिश के साथ क्यों बोलते हैं, वजू नहीं हो सकता है, नमाज नहीं हो सकता है. In these details you are lost cases. You may not think so. Okay, so these kind of problems will come up. You are doing zulm on yourself. अभी आप जाके or witness, because Rasulullah, the Quran said that Allah is Akbar and there is no God but one God. अभी आप जाके ढूंढे which God is this? अगर आपको मिल गया. But you've made heroes. You've made Hussein. You cannot go without Hussein to God, one true God. No, I do not go to Pakistan. Nanga Lal is asking, ma'am, क्या आप अब कभी पाकिस्तान जाती हैं? No. So you cannot reach. I don't know how to say it. I have to show you. I've had problems that duality in religion. इधर देखें, ये terror, destroyed houses of the. ये क्या इसका aftermath? ये सफिया बिन्त हुए के साथ शादी कर ली, चीफ डॉटर थी. जवेरिया बनी नादिर की थी, स्लेव गर्ल कर दिया. साबित बिन कैस या कैस बिन साबित के हैंड्स में गई. फिर आई बिनती मांगा प्रॉफिट मोहम्मद से. सुन्नी के हदीसेस में है, शिया के हदीस में नहीं मिलता है इतना. बिकॉज ऑफ कोर्स प्रोजनी रसूलुल्लाह की है. दे वांट, और आप इससे वर्शिप कर रहे हैं. अबू बकर ने सही कहा था. सो बिकॉज आई कांट गो दैट लॉजिकल फिलोसॉफिकल वे टू शो यू डुअलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है. अगर खुदा अल्लाह इज अदर देन यू, डुअलिटी का प्रॉब्लम आ जाता है. ओके, सो the thing is that you'll be struggling for the rest of your lives, saying these servants have been sent like the stars to guide us. But you know what? You have been, और इनको वर्शिप करेंगे आप, जैसे मोहम्मद को कहा गया है वर्शिप करो. And then how come सूर्य तकवीर में there's a messenger possessor of power with Allah. तो उधर आप polytheists gods बना रहे हैं. सूर्य जुमर की आयत, using these awliyas, worshipping them to gain the position, gain to the position of Allah. फिर ऐसे आप in a roundabout manner इधर आपको वर्शिप करा रहे हैं मोहम्मद की, मैसेंजर ऑफ अल्लाह. Ask yourself, this justified? From on the other hand, policies, idol worshippers. Acha, as a Shia, when I read this, so when you meet those who disbelieve, smite their necks. But when I read it in like the way it's put without the brackets, and when I saw contradictions, like, at that time it was like, oh yes, great, yes, these disbelievers इतना जुल्म किया Prophet Muhammad पे.
करबला में तो हमने देख लिया यजीद के आर्मी ने कैसे जुल्म किया है। फिर फिर कूफा, फिर शाम। Where is it? 9. Oh no, I'm on Muhammad. I should have been on Surah Fat. Sorry, why did I put? I was just talking and I was thinking of Muhammad. That's why I put Muhammad. It's actually Surah Fat. अच्छा, सर्वेंट नाम का बना है, ये आप देखें, ये सर्वेंट को आप क्या वर्शिप कर रहे हैं। बट यू नो द ट्रांसलेटर्स, आई रेड मल्टीलिंगुअल कुरान, क्या क्या दे डिस्टोर्टिंग। In order that you, O man, may believe in Allah and His Messenger, that you may assist and honor Him and celebrate His praise morning and evening. His praise. So, Messenger of Allah, celebrate the Messenger of Allah's praise morning and evening. Eh, बहुत जगहों पे अब अल्लाह को काफ़ी बहुत जगहों पे लिखा है, in order that you, O man, may believe in Allah, celebrate Allah का praise तो celebrated and बहुत जगहों पे लिखा है, but इधर अल्लाह के बाद his messenger का नाम आ गया ना, his messenger का नाम आ गया। हाँ, ये आनंद किरण ऐसे करता था। नंगा लाल। So, आपकी बर्थडे कब है? प्रिंसिपल के उस पे तो नहीं है मेरी? हाँ, आप बताएं, आप पाकिस्तान में तो नहीं रहते हैं? आपको मेरी सौतेली माँ ने तो नहीं भेजा, जो मर गई अभी? नहीं मैम। सुना था उसका भी एक हिंदू दोस्त था। मैं इंडिया। हाँ, तो आनंद किरण, आप हैदराबाद से हैं? आनंद किरण भी हिंदू था, इंडिया से। सो मे बी कनेक्शन, यू नो, लाइक उनका जो इंडियन हिंदू दोस्त था, सौतेली माँ का, मेरी स्टेप मदर। हैदराबाद। आप हैदराबाद से हैं? इंडिया। In order that you, O man, may believe in Allah and His Messenger. मैं इंडिया तो बहुत बड़ा है ना, मैं तो यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश। हैदराबाद कहाँ है? इन तो मैं यही तो कह रही हूँ, मैंने नहीं कहा कि इंडिया छोटा है। आई डिडंट से इंडिया इज स्मॉल। हैदराबाद साउथ में। हम्म। तो अभी तक मेरे पीछे पड़े हो, पागल कर दिया। 26 neighbor Didi. You see, your Shias, वो तो खैर सौतेली माँ was a Sunni. My father made her a Shia. My stepmother was a Sunni Muslim. मैं कहाँ पीछे पड़ा हूँ मैडम जी?
हाँ, अब तो पढ़े हैं पीछे। इधर दो घर हैं, टू हाउसेस। कैन यू सी? रिवर है आपके घर के पास, हैदराबाद में। These Shias was Sayyid Yusuf Zaidibi. Lan Allah. On Sayyid Yusuf Zaidi and his wife Chanda, Farah Yusuf. खुदा इनको ऐसा पूछे। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, नंगा लाल कह रहा है। हम्म। ऐसे जुदा किया मुझे इस यूसुफ जैदी ने बेदर्दी से। इसको किसी ने लंदन भेज दिया। खुदा इसको ऐसा पूछे। मैं तो अभी ऐसी बदवा देती हूँ, जब से इनके साथ बैठी ना, इन शिया सैयदों के साथ, I started to curse. Became so insane. Just a minute, I have to get something. तो शिया ने आपको भेज दिया, जैसे आनंद किरण को भेजा ना। वो बदबख्त शिया को बुलाओ। उस बदबख्त शिया को बुलाओ। ठीक है। यूसुफ जैदी ने कहा कि शिया भी इनके सैयद, इनकी माँ पे जादू हुआ था, और ये सैयद सैयद पे जादू करे शिया। बहुत गंदी गंदी बातें थी। शिया, सैयद शिया इन पाकिस्तान, यूसुफ जैदी, उसका फादर जज था सिंध कोर्ट में, और इसके दो भाई आसिफ और आरिफ आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन किया था। ये ऐसे बदबख्त शिया थे। खुदा इन शियाओं। मुझे कहा यूसुफ जैदी ने सही कि बीबी फातिमा ज़हरा was my mother. Person has sent you. I can see that. It happened in Karachi also, on Desi chat. Oh, yeah, you're getting excited like you're Anand Kiran. Oh, with three H's. I should screenshot. अभी छोड़ोगे नहीं मेरा जान। Shia, Sayyid Shias and child molestation, and Sayyid Yusuf said that he was molested by his uncle, Shia, Sayyid. He told his father, and the father said, father didn't take any action, didn't even care. In fact, on the contrary, he blamed it on Sayyid Yusuf Raza Zaidi. Now he's in London with his wife. ये सैयद फैमिली, शिया फैमिली, आनंद किरण, ये ऐसे बदबख्त शिया थे। अच्छा, ब्राइब लेके ना चले गए लंदन। I even have Anand Kiran's number. Hyderabad.
Verly, Verly. I have it on. I've put it on the group, Facebook. Their numbers. Adila Sheikh and Anand Kiran, Yusuf Zaidi in London, Sayyid Yusuf Raza Zaidi. मैम मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है. हाँ वही आनंद किरण कह रहा था कि he's never left India, he's never traveled, but he was on Desi Chat. So Anand Kiran didn't have a passport because he never traveled to any place in India except that he was living in Hyderabad, India. And this verse doesn't say Allah's glory morning and evening. Surah Rahman, isn't it enough? Now, what is it? The favors of thy Lord. How many favors of thy Lord would you deny? Praise be to God. This Surah Fatiha is there. मैम मैं आपकी अपना आईडी कार्ड दिखा दूंगा मेरा नाम हाँ ये तो करना पड़ेगा because I don't trust you. मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है. They made me go insane in Karachi. और वो मैम if I lie make me no I cannot make you murga or this kind of nonsense. Come to reality, come to reality. How can I trust you when Anand Kiran betrayed me, when in Karachi Sayyids can betray you, on your face they can lie to you, when your father yourself lies about his marriage, puts his hand on his daughter and says, Tumhari kasam. You know, putting their hand on the head with no fear. Some lady had come. She told his daughter that your father is married again. Some lady had come from Dubai. His favorite brother's wife, जब बाप झूठ बोल के मक्कारी करता है, कस्में खाता है. I was told by another Shia कि हमारे शिया हैं जो हजरत अब्बास के अलम पे जाके हजरत अब्बास हाथ रख के झूठ बोलते हैं. मैं तुम्हें क्या बोलूं जहरा. मैम मेरा नाम नंगा है. आप बताओ कार्ड दिखा दूंगा. कार्ड दिखाने से क्या होगा. सैयद यूसुफ जैदी ने भी ऐसे कार्ड दिखाया ऐसे आके पीछे से ऐसे स्टैबिंग करते हैं, ऐसे तंग करते हैं, हरास करते हैं, इंटरफियर करते हैं. अभी देखें जैसे आप आए हैं, आप इंटरफियर कर रहे हैं. आई फील कंपेल्ड, आई फील ऑब्लाइज्ड. ऐसे ही आपका वे आनंद किरण ऑल्सो. योर वे
very nice. And Didi, calling me Didi. दीदी का बेड़ा कर कर दिया इतना सुई छुरी मार के. Shias were, I think my father was behind him and his wife there, very strong, Habiba. Very, very चालाक और ऐसी गालियां दी हैं बहुत यू नो वो very psycho. Mind your ears. وتسبحوه. وتسبحوه. Morning and evening. And respect him and glorify him morning and evening. Servant of Allah. What a lie. Contradictions. Worship no one but Allah, praise no one but Allah, glorify no one but Allah. What a lie. And do not associate anyone with Allah except for in Surah Araf it says with authority. Now you can worship Prophet Muhammad. I cannot trust anyone, sorry. The questions you have been asking have interfered in my uh, lecture on this to show I come here struggling and I can't take the debates and all this too much. पता नहीं मर्द क्यों मेरे पीछे पड़ जाते हैं. First you said you like my voice. You're giving Indians a bad name. You're giving Indian Hindus a bad name. पुराने इंडियन लोग कैसे होते थे, अपने आप को मेकअप नहीं करते हैं. They don't go after the girls' voices. I'm going to time you out. Oh, I'm very scared of you. You've come here saying that you like my voice. I've timed him out. So now let it be. ये हिंदू बन के आया है बेखैरत, telling me giving Hindus a bad name. That's why Abu Bakr said, if you worship Muhammad, know that he is dead. For sure, Shia, Sunnis should know this, that this ayat means worshipping Muhammad. And Sunnis couldn't see it, and Shias called him a hypocrite. I believe in Abu Bakr that he was a polytheist, he had no other way. I mean, he was forced to give his daughter, perhaps 6 year old, 7 year old daughter, to Prophet Muhammad when he's 51 years old or 52 or 54 even. One doesn't know. Abu Bakr said, and rightfully so, I disagree with the Shias. Muhammad
is dead. If you worship Muhammad, then know that he's dead. What does this mean, Muslims? And why would I want to talk to a Hindu boy? तो ये मुझे ना इधर लगता है कि इधर भी like they are setting like ये इधर का माहौल ऐसा कर दिया है ना कि हिंदूज भी खराब हो गए. मुसलमानों ने ऐसा माहौल दे दिया है. The environment. Despite being overwhelmed by grief, Abu Bakr addressed the people saying, whoever worshipped Muhammad, then Muhammad is dead. Why did Abu Bakr have to say this? इसकी बेटी को लेके शादी की है जब 50 years old का 50 plus 6 7 years की क्या हम वो शिया पहले बोलते थे अब छुपा रहे होंगे. Now they say that Aisha was 19. Okay, the Shia say this. लेकिन पहले as a Shia I remember they told me that 9 years old बाले like namaz और ये सब becomes compulsory on the girl, the female Muslim. So, in order to instill, if Prophet Muhammad doesn't practice it, he had to practice it to show us. If Prophet Muhammad, we could have all these, different interpretations. Then we would have the ijma. Then we would have all these. अभी इमाम हुसैन को देखें वो क्या कर रहा है या all this confusion. So we were told that God had told Prophet Muhammad to get married to a 9-year-old, and this is the age for marriage also. And namaz becomes compulsory, fasting becomes compulsory. So had Prophet Muhammad not practiced this, like I was like, they use later on, when I started to think, have doubts and started to question my religion, Islam. अच्छा अब झूठ अब cover कर रहे हैं. So there could be, a 19-year-old, but then who would you ask? What is the age of marriage? Doesn't say in the Quran ayat. When does a woman become a girl, child become eligible to say her 5 times obligatory prayers or perform these obligatory worship forms of worship? There would be confusion. So we were told Shias, but now even the Shias are hiding this. They're saying no, they just want to save their religion and the face. You see, when the ego comes up, it can do massive things. We can't even think. The power of the mind and the cleverness, cunningness of the mind, it has no limit. What is this here? Yeah. अरबों से आ रहा है क्या करें? Why are you lolling your tongue and all this? What is this?
Who's sending these? You worship Muhammad. So if you worship Muhammad, because you do, and you don't even admit that you worship Muhammad, but the ayat says you worship, praise him morning and evening. What is this? And submit your will to his judgments completely. Oh, this is Muhammad. So you, as a Hindu coming here, Nangalal says, "Ma'am, sorry." Okay, okay, Nangalal. Oh goodness. So these Muslims, आप देखें Surah Fat ayat 9 and see your hadith here. Why would Abu Bakr say this? Because don't you think he's done injustice? Removing and then saying God has given authority, like you Sharik Allah आप कर सकते हैं, you can associate with Allah and praise Muhammad morning and evening, Surah Fat ayat 9, not Allah, i.e. Allah. Ji, Nangalal, thank you. Oh no, you're welcome. Please you just forget about it and best wishes to you. Please don't. Now I'm into this work, so sorry. ये शियाओं ने भी जुल्म किया है अपनी बच्चियों पे, अपने किस किस न किस पे जुल्म किया है शिया, बहुत जुल्म किया है. Shias have done the worst zulm on themselves and zulm on others spiritually. Shia Sayyids, because इनके great grandfather का religion है, and Fatima Zahra is their mother. सबसे बड़ा जुल्म शिया सैयद्स ने किया है. Continuing this religion, और ये मुहाफिज हैं इस religion के. एक तरफ से सूरज जुमर में कहते हैं कि religion should be exclusively for Allah, और इधर against the polytheists, and this can be taken against Christians and the polytheists. There are other verses against polytheists. And we are told in Shia Islam that without the Holy Five, we cannot go, we cannot be connected, go near to God, this true God. ये बहुत जालिम है. Undoubtedly, unquestionably, for Allah is the pure religion, and those who take protectors besides Him say, we only worship them that they may bring us near to Allah in position.
ये क्रिश्चियंस के लिए भी इस्तेमाल, against the Christians, polytheists के लिए भी. If Allah had intended to take a son, you know, surely the religion, worship and obedience is for Allah only. And those who take awliya, protectors, helpers, lords, gods, besides Him, say we worship them only that they may bring us near to Allah. So, in other words, they worship Allah. These are just guides sent down. So, I think Yazid was made like uh, Zalim. I mean, his fathers were, his forefathers were. Huh? Nanga Lal is blaming me. Well, I'm going to take a screenshot here. Let's see. Madam, if you don't like my name, I mean, he's blaming me for not liking his name. And that's why maybe perhaps, you like my voice, right? You said you liked my voice here. Now they've sent XXX dot. Timed out XXX 20 dot fun. Nanga Lal is saying, Madam G, अगर आपको मेरा नाम पसंद नहीं है तो मैं कुछ और रख लूंगा जो आपको पसंद है. Remove him. Harassment. Gaslighter. No human rights, no one to come here and help me against these people. I don't have a friend here. Trustworthy. Nanga Lal has come back again. Nahi ma'am, blame nahi kar raha. Of course you're blaming me. Just, you are a Muslim. Nanga Lal is a Muslim. You are clothed. You, like in the Bible it says, Bible में you are a Muslim. Bible में कहते हैं कि a wolf in sheep's clothing. Which coward Muslim are you? Giving a bad name. You're Kashmiri Muslim जो अपनी माँ बहन को नहीं छोड़ते हैं. Go for muta. Maybe in the night you can't sleep. Go for muta. The religious scholars say it's very unhealthy. Go for a slave girl.
Go for a slave girl. Go for muta. Go for muta. Tell your busdil Muslim to come here. यूज कर रहा है मुसलमान ऐसे जालिम Tell your coward Muslim to come here. तुम्हें इधर क्या मिल रहा है कितने दरम मिल रहे हैं या पाकिस्तानी रुपीस अगर तुम्हें you don't know what I'm saying then don't come here तुम लोगों ने खामा खाम झूठापन बनाया है एक्स मुस्लिम्स इंडिया से you Muslim molester where is that Salahuddin and where's that what you set up ऐसे क्लेवर मुसलमान मैंने देखे हैं और जालिम भी सब शिया अपने उसमें पड़े हैं अपने My goodness, what are they set up by Muslims to come here and harass me and derail me from this topic. ये मुसलमान के बनाया हुआ है इंडिया मुगल्स टाइम का इंडिया मुद्दा दे दिया है मिस्ट्रेसेस दे दिया है सबसे बड़ा शैतान You see, that's why I have to do this because I don't trust these ex-Muslims. Pakistanis, Arab, I don't know where this Arab
He's an Arab or where he's from. Another Saladin or Aladdin, apostate Aladdin or Saladin or whatever you are. So they want to discourage me like this, and parasites. Hoon yani. They know my father's family studied my psychology. My father knows. They know what this is. How to, like, when the girl doesn't like men coming here, they know how to, but I will not be intimidated. They know how to intimidate me. I mean, try to provoke me, and they will use different tactics to provoke me, intimidate me. Exasperate me through these ways, intimidating. A young, single, unmarried person, I don't know where he could have simply given his card here, ID card. कैसे सालिम लोग हैं, इससे ही आए हैं. Glory, God knows what this is. This look, goodness, what kind of cool people they are, and very clever, cunning. These Muslims are so. Yesterday I was saying, like my goodness, the Shias also very cunning people. He's come back. Time you out. My goodness. Very cunning people. The Shias also, Sayyids I saw, very cunning. Liars. Sons of liars and Zalim. Very cunning Shias. Go and do what you like and worship what you like.